workshop series and hope we all gain valuable insights from the sessions over the past 2 days. We already learned meaning and importance of research, research methodology, types of research that is qualitative, quantitative, and mixed method research. Now, we are excited to continue the discussion today with even more engaging content and thought provoking presentation. Let's start today's session with Dr. Chakradeo sir, Principal of Chembur Sarvanka Shikshan Shastra Mahavidyalaya. Sir holds multiple qualifications, including MSc, MAd, LLM, PGDME, MA in Psychology, PhD in Education, NetSet in Education, Diploma in Yoga Shikshak, and MBA in Human Resource Management. With 20 years of teaching experience at the college, he has served as a PhD guide in education, NAC coordinator, and field coordinator for the University Department of Lifelong Learning and Extension. Dr. Chakradeo has conducted numerous workshops as a resource person on topics such as stress management, emotional intelligence, laws protecting women and children, anger management, time management, yoga and health, human rights, constitutional law, self awareness, and mindfulness. He has published 30 research papers in national and international journals and has co authored study materials for the University of Mumbai. Dr. Dr. Chakradev sir has received several awards and recognition, including Best Research Paper Presentation Award, Best Paper Awards, and certificates for completing Swayam courses on developing soft skills, personality, and IKS, that is Indian Knowledge System. Sir, you are deserved for this. So thank you, sir. You are being with us and you are welcome. And sir, it's over to you. Sir, Thank you, madam, for your nice words. So, shall I start the presentation and session? yes, sir, yes. I hope the screen is visible and I am audible. Yes, sir. Yes, sir. In between any technical glitches or maybe slides are not moving or my voice is not reaching up to you, please let me know. So, with your permission, madam, let me begin with. Yes, Sir, sir. why you are taking permission, sir? You are great, sir. Okay, sir. Madam, you are a host. Okay, so the topic given to me is research design, and of course, if you like today's session, we are going to meet once again on 19 with statistics. So, may I request all of you that initially it may looks very small, but as we proceed, the things may get complicated. So generally, whenever we are having this online session, either we take the photos or we take the screenshot. So may I request all of you to keep your pen and paper ready. And at the end, I want all of you to prepare the flow chart of the various research design that I'm going to share and present with you at last. And that you will share your flow chart by opening the cameras. So I expect all of you to be a very alert. So with your permission, let me proceed. So research design. So we start with the basic question. What is a research design? Now you take any university, generally the PhD thesis or the research is concluded or it is presented with the five or six chapters. The first chapter is generally introduction. The second one is generally a review of related literature. And the third one is about the research design. And then fourth one that follows the descriptive and inferential. And then maybe 6, 7 like conclusion, recommendations, suggestions, and university to university, this last part may vary. But the very common part in all the PhDs, you take any university across the India, the research design is a very compulsory component. So let us understand the theoretical aspect of the research design, and then we will have the deep exploration about the various types of research design for different types of research. Okay, so the research design, I have
made some word bold. For example, a research design is essentially a blueprint or a framework. So we know the blueprint. For lesson also we prepare the blueprint. For architecture work also we prepare the blueprint. So it is the blueprint or framework that going to help us whenever we are going to proceed for the research. So it is basically a blueprint. Now my research design is going to help me in the following ways. The first of all, it will help me to properly frame the objectives, and according to my objective, it will guide me whether I am taking the right approach or not. So basically it will guide me for confirming my objectives and the path I am going to take. Number two, it will definitely going to focus what sort of data I am going to collect and by which medium I am going to collect that data. For example, am I going to have the survey? If I am going to have the survey, then what sort of data I am going to collect? If my research is on experiment, then what sort of research design I am going to utilize or use? If my data collection involves interviews, then how I'm going to collect the data with the interviews. So the second important information that one can get from the research design is how, as a researcher, I am going to collect the data. Number three is the sampling methods, how I'm going to collect the samples. So basically it is going to help me in deciding the objectives, deciding the data collection methods and sampling methods. And last but not least, the data analysis techniques, because based on my research design, the data analysis techniques will vary. So these are the four decisions which I am going to take while deciding my research design. So in nutshell, we can say that it is a logical plan. Why I'm saying it is logical plan? Because yet my research has not started. Before starting the research, I have to prepare this blueprint. So in essence, it's a logical plan, and that plan is going to ensure that research problem is addressed effectively and data collected will provide the valid and reliable answers. So it is going to pave me the easiest way to proceed for the further research. So this is what the basic about the research design. So far, I am very audible. Yes, sir. And the slides are also moving. Yes, sir. A lot of effects are given now, so I'm just confirming. Okay. So we understood that research design, it is something very logical. We understood that research design is like a blueprint. I also understood that research design is going to help me to decide in prior how I'm going to collect the data, how I'm going to collect the samples, the statistics I'm going to employ. So every now and then I'm going to proceed as per my research design. Now the question is, what are the features or what are the characteristics of a good research design? That whenever you are undertaking any research, whenever you are preparing the research design, it should comprises the following features. Number one, it should clearly mention the objectives, because looking at the objectives, one can understand the type of research. So objectives should be very clearly mentioned. Then based on your objectives, the appropriate methodology selection, and that appropriate methodology is also very clearly mentioned in the research design. It is said to be a good research design. Then it is a very flexible, because based on the problem or based on sudden occurrence or based on some accidental issues that I may experience during my research journey, I need to modify, I need to change, I need to alter my research design. So it should not be rigid. The flexibility is one of the important feature of a good research design. Then control of variables also to be mentioned. I'm sure you must be having one of the session regarding the various types of variables and controlling those variables. So how I'm going to control different variables, that is also to be mentioned in good research design. Then sampling strategy also clearly mentioned. Then the data collection is also very clearly mentioned. Then whether my research is going to be very practical, it is going to be feasible or not, I can guess by looking at my research design. Because something which is not possible, I'm not going to take it as a research. But unfortunately, suppose I select one of the topic which is not going to happen or is not going to, for example, if I want to know learners behavior during pandemic, and if I decided to conduct the research on this topic, it is going to be very challenging, because we all are vaccinated people now, and hardly we'll get the chance in future that we sustain this corona and pandemic. So it is not going to be feasible, it is not going to be the practical now. And therefore this research design helped me to decide whether my research is practical and feasible. And last but not least, the ethical consideration.
So these are some of the characteristics of a good research design. I repeat, what are the characteristics? Number one, objectives are clearly mentioned. Based on objectives, methodology, sampling, data collection, and how I'm going to control the different types of variables is properly mentioned. Secondly, the research design is flexible, it should be feasible, and all ethical consideration is properly taken care when I am presenting the research design. So these are the some of the characteristics or features of good research design. Now, why we required the research design? I think you can read in mind also. I need not to explain you. I just request all of you just go through these 6 points. So this need and features, they goes hand in hand. My purpose is very clear. When I prepare the research design, I ensure validity and reliability of my research. When I prepare the research design, I am able to manage my resources properly with efficiently. Whenever I have such blueprint with me, it will also help me to enhance the quality of my data. It will also address ethical issues, if any. And overall, it is going to promote, it is going to facilitate, it is going to foster my analysis. And hence research design is a very important aspect in a research. So it is like a blueprint. Well, now let us take one example and then we will go with we'll deep into research design. Suppose my research topic is, anyone will read? सती मॅडम, तुम्ही कोणाला तरी सांगा एखाद्याला वाचायला. मीच वाचू का सर? नाही, पार्टिसिपंटना सांगा ना. Okay, participant, please. Hello. You can take the name so that only that person will read. May I, ma'am? Yes, yes. Imagine a researcher studying the effect of social media on the mental health among the teenagers. A good research design might involve. Yes. Now this is the topic. Now, based on this topic, if I am going to prepare the research design, then research design should mention the following things. It should have the very clear hypothesis. For example, this is just an for example. A clear hypothesis can be stated as excessive social media use increases anxiety. So it is mentioning hypothesis. Then approach which I am going to use for my research. So I may be using a mixed method approach. So I may be using a quantitative as well as qualitative technique, survey for quantitative and interview for qualitative. So it should be mentioned in my research proposal. Then sample. So my sample is definitely going to be the teenagers. It is to be mentioned in my research design. And control of variables, how I'm going to control the variables. Now there are different types of variable. For example, the variables like age, gender, or pre-existing conditions. So as a researcher, how I'm going to conduct these compoundable variables. So everything should be mentioned in a research design. So this is just an example with the title, what should be incorporated in the research design. Then what sort of tool I am going to use. For example, in this particular research method or in this particular research topic, I'm going to use the anxiety scale. So as we mentioned, the characteristics of a good research design, it should include the method, it should include the control of variables, it should include the tools, it should include the methodology, the sampling, etc., etc., etc. Now I request all of you once again to keep your pen and paper ready, because we are going to discuss a lot of and variety of research design. So at a time it may looks very simple, but at last you will have minimum 16 to 17 types of such research design. So are you ready with your paper, participants? Yes, sir. Okay, and last exercise, when we'll conclude our session, the last exercise, you are all expected to draw the flow chart indicating all the research designs, and that you will show on the cameras. Okay, so let us understand different types of different types of research design or different types of experimental research design. Now these research designs are
classified based on different perspectives. For example, the first one, the research designs are classified on the basis of the degree of control. Now we know one of the essential component of research design is how I am going to control the variables. Now, how and to what extent, to what intensity I am going to control the variables in my research. This is the first perspective, and based on this perspective, we classify the research design into based on the degree of control. And these types are: number one, it is pre-experimental. The second one is true experimental, and third one is quasi-experimental. So these are the three types of research design based on how and to what extent I am going to control the different variables. This is the first type, based on degree of control. I repeat, based on degree of control. I repeat, is the degree of control, to what extent and to what intensity I am going to control the variables in my research. The three types are pre-experimental design, the true experimental design, and very popular amongst, particularly in education, we use quasi-experimental design. So this is the first way of classification. Now we move ahead to the second way of classification. Second one is based on the level of randomization. Randomization means, of course, we are going to refer this term randomization. So how I'm going to randomize, or how I'm going to distribute my sample into different groups. So based on that randomization, the experimental designs are as follows. So there are basically four types based on randomization. Number one, completely randomized design. We abbreviate it as CRD. Then second one is randomized block design, again based on randomization. The third one is LSD, that is Latin square design. And the fourth one is match pair design. Generally in education, we don't use this design, but yes, you can utilize this type of, or these four types of research design based on the randomization. The earlier criteria was different. What was the earlier criteria? Yes. What was the other criteria? First one. Yes, participants. Degree of control. Control of variables, degree of control. Yes, that was the first criteria. Now here the criteria is based on randomization. So this is the second way of classifying the research design or experimental research design. Now we move ahead with the third type. Now third type or third classification is based on the structure of design or the nature of variables. And the types are, there are basically three types, and these types are between subject design, within subject design, and mixed design, that is between and within. So this is the third type based on the nature of variables. We move ahead with the fourth way of classification based on timing and measurement or measurement sequence. Now based on timing and measurement sequence, the research designs are classified into three types: longitudinal designs, cross-sectional designs, or sequential designs. Oh, hello there, hello. Yeah, excuse me. Now, this is the fourth way of classifying the research design based on timing, longitudinal, cross-sectional, and sequential. Now, next type, based on number of variables, that how many variables are included in my research. So based on the number of variables, the research designs may be classified as univariate design or multivariate design. So this is the next way of classifying the research design based on number of variables. This is the fifth type. Now we have six types based on purpose. For what purpose my research is being undertaken. So based on purpose, I have different types of research design or different way of research design. So these are called descriptive. Generally we use for descriptive research. Then causal comparative. Generally we use this particular design in causal comparative research. And the next one is exploratory design. I use for my exploratory research. सावकाश
जाऊ. So this is based on the purpose. Now I further classify based on number of independent variables included in my research design. And the types are single factor. Can you guess the next type? Multiple factors. Yes, very good. So it is multiple factors, or it is also called as factorial design. I think these words are familiar to us. Am I right? Am I right? Yes, sir. Yes, sir. So this is the seventh way of classifying the research design, that is based on number of independent variable. Now, so in nutshell, there are how many ways to classify the research design? How many ways at least we have referred? 7. Not audible. Yes, please. Anyone? 7, sir. Yes, there are the 7 types of, or the 7 way to classify the research design. Of course, different authors have given different ways to classify. Some of the authors, like in Kothari's book, you will get there is only 2 way to classify. One is formal and one is informal. So based on the purpose, based on the control, based on the randomization, based on nature of variable, based on the number of variables, based on number of independent variables, we know there are 7 different ways by which we can classify the research design. Of course, we are going to refer most of this, but majority or prominently, generally, we in education we use, which one we use generally in education? जिनका PhD हुआ है वो बता सकते हैं, or those who have already prepared the proposal, or those who are in pipeline, they must be knowing which is the most prominent research design. Suppose my research is experimental research, so which design I refer most of the time? Quasi experimental. It is which one? Quasi experimental. Yes, quasi experimental. So quasi experimental क्या है? And of course there are 5 types of quasi experimental design. Those, all those design we are going to refer. Okay, so I hope you are with me. Yes. Okay. Now, before we understand the different types of research design in detail, we need to understand few terminologies, because without understanding or without having the clear idea about those terminologies, I just use the words. So I actually lose the essence of the research design, because I have to understand the exact terminology. Can you guess what are different terminology we use in research design? Any terminology? At least one. Control, manipulations, randomizations. Very good. Randomization. Very good. Very good. Okay. Now let us see different terminology. And I believe this terminology may be familiar to you, or at least the names we heard. The first one is called variable. We are going to refer this in detail. Huh? Don't worry. So these are some of the important terminology generally we employ in research design or in research. Pradipti, Mamta, I want an English paper. Anand, Aliza, English paper. The second terminology or the second term is IV, that is independent variable. Now I'm sure you must be guessing what is the next. When I say independent, what is next? What is next? Dependent. Very good. It's dependent variable. Then confounding variable. This also we are going to learn. Then control group. And I'm sure when I'm mentioning control group, the next you must have guessed. What is that? Uncontrolled group. No, not uncontrolled group. This is called experimental group. So control group and experimental group. Okay, not uncontrolled. Now, then randomization. We need to understand this terminology because we are going to prepare the research design, and these are very common words or frequent words that we employ in research design or in general in research. Then there is one terminology called placebo.
we are going to refer this terminology also. So there are how many terms I am mentioning here? 8, sir. 8, but this is not the list. List is still continuing. The list is very exhaustive. Few more terminology. Replication. With the word we can understand the meaning of this word replication. That is repetition. Next, blinding. I think this is new to many of us. Blinding. आपने सुना है blinding के बारे में? Yes. Blinding. सुना है? No, sir. No. So definitely this is a new, not new terminology. We are not aware. Blinding. But at least we know the word blind. Yes. Ending clear out, right? बोलिए. Blinding. Sir, hello, sir. Yes. Sir, blinding is that, na, that placebo effect? Not placebo effect. We'll come to this term also. Okay. Then blocking. We make different blocks. So we are familiar with this word block. The process is called blocking or block. Then factorial design. We are familiar with these words, but what does it mean? We are going to refer in detail. Then intervention or treatment. Of course, we all are familiar with this word, intervention or treatment. But technical definition we should know. Technical meaning we should know. Then measurement of variable and manipulation check. So in earlier slide, I presented 8 terminology. In this slide, I am presenting how many terminology? 6. 6, sir. 6. So list is not yet complete. Few more terminology we need to, yeah, it's almost finished. So we will discuss in detail. So what was the first terminology? Variable. So what does variable mean? Variable means it can be any quantity or any factor or any characteristics that can change or can take different values is called as variable. We are familiar with this word, but what does it mean? Vary means to change. So anything which is going to change. So that can be any characteristics, that can be any quantity, or that can be any factor that can change or can take different values within the given study. And in experimental design, the variables are the elements that researcher observe. Sometimes researcher manipulate, or we measure that particular thing which is going to change or which is going to alter or can take the different values. So this is the simple definition of variable. Anything that can be changed or that has a capacity to modify, that has capacity to take different values can be termed as a variable. Can you give me the example of variable, or at least the type of variable that we know? Very prominent. Yes, please. You can unmute and please answer. What are 2 types of common variables that everybody knows? Age, gender, caste. आवाज ठीक से नहीं आ रही सर. Any other participant? कोई दूसरा participant? अरे मैडम आहेत का? हो सर, बोला. Candidate are not answering. Hello. हे बघा, participation is very important because it's very important subject in your B.Ed and your future also. So please, participation is must. You take part in each and every session because आणि सर असे आहेत की सर तुम्हाला व्यवस्थित सांगणार. इवन मला पण, मी एकही शब्द सोडत नाहीये. मला जे जे अडचण आहे ते मी विचारणार आहे. सो यू टेक पार्ट अँड आस्क. Okay, so be alert. Age, sir, age, gender, caste, etc. Yeah, oh, very good. Age, gender, caste, etc., etc. Correct. Okay, so variable is anything that can change or that can take the different values. जिसको हम बोलते हैं variable, जिसको हम हिंदी में चल बोलते हैं, मराठी मध्ये त्याला आपण चल म्हणतो. Okay, so this is the first terminology that we need to understand. Then the next one is independent variable.
इंडिपेंडेंट का मतलब होता है नॉट डिपेंडिंग अपॉन एनीवन। तो ये वेरिएबल का पहला प्रकार है, या इस काइंड ऑफ अ वेरिएबल। सो द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड और कंट्रोल्ड और वी डोंट अलाउ इट टू चेंज, इट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। For example, suppose I am performing a simple experiment. How different amount of sunlight affect the plant growth? So in this case, the amount of sunlight, for example, I can provide the sunlight for 2 hours or maybe for 4 hours or maybe for 6 hours. So the amount of sunlight I'm going to provide is called as independent variable. So we understood what is variable. We understood what is independent variable. Independent means manipulated or control or not allowed to change. It is called as independent variable. Then third one is dependent variable. So the variable that is being measured or tested in the experiment, it is called as dependent variable. So variable can be of different types and the simple types are independent and dependent. So dependent का मतलब क्या होता है कि जिसको मैं मेजर करने वाला हूं, जिसको मैं टेस्ट करने वाला हूं, it's expected to change as a result of independent variable. For example, in earlier case or in the same experiment, the height of the plant that is measured in centimeter is going to be the dependent variable. So independent variable was the sunlight. Maybe I was providing the sunlight for 2 hours, maybe for 4 hours, or maybe for 6 hours, or maybe for 8 hours. So providing the sunlight was the independent, or is independent variable की वजह से the things that may change or the things that I can measure as a researcher may be the height of the plant. दो घंटे sunlight देने से what is the effect on the height of the plant? 4 घंटा देने से what is the effect on height of the plant? 8 घंटा देने से what is the effect on height of the plant? So whether the quantity of sunlight I am providing, does it affecting the height of the plant? And height of the plant is changing. Height of the plant is being measured or tested, and therefore height of the plant is the dependent variable and sunlight was the independent variable. So I move ahead. Then we have the control group. Now the control group का मतलब क्या होता है? A group that does not receive the treatment. Now we'll also understand what does treatment means. So basically we have two types of group in experiment. One is called control group. हॅलो सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, पण आपल्याकडे मराठी हिंदी मुलं पण आहेत. थोडं मराठी हिंदीतून पण बोला म्हणजे त्यांना पण समजेल. असं चालेल, मराठी हिंदीत पण बोलू? येस येस येस, हिंदीची मुलं पण आहेत. येस ओके ओके, चलिए मैं बीच बीच में हिंदी में भी आपसे संवाद करूंगा, नो प्रॉब्लम। तो अगली जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। तो जनरली दो तरीके की ग्रुप्स एक्सपेरिमेंट में होते हैं, मिनिमम 2 ग्रुप्स। एक होता है कंट्रोल ग्रुप और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो कंट्रोल ग्रुप का मतलब क्या होता है? कंट्रोल ग्रुप मतलब जहां पे हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया, जो कि वैसे के वैसे ही बना रहा है, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई ड्रग की टेस्टिंग कर रहा हूं, इन अ ड्रग ट्रायल a new medicines effectiveness, the control group receives the placebo। अब ये प्लेसिबो क्या है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जनरली 2 ग्रुप है मेरे पास। एक ग्रुप जिसके ऊपर कोई मैं ट्रीटमेंट नहीं दे रहा हूं और दूसरा ग्रुप ऐसा होगा जिसमें मैं कोई ना कोई ट्रीटमेंट दे रहा हूं। मान लो मुझे कोई एक ड्रग या कोई एक औषधि है जो कितनी इफेक्टिव है, इसकी जांच पड़ताल मुझे करनी है। तो जो कंट्रोल ग्रुप होगा उसको मैं कुछ भी नहीं दूंगा, या उसको मैं जो दूंगा वो कोई काम का नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं प्लेसिबो। हो सकता है मैं 2 टैबलेट है, एक टैबलेट में एक्चुअली वो मेडिसिन है या ड्रग है, और दूसरी उसके जैसे ही दिखने वाली टैबलेट है, बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें शुगर है खाली। सो वो ड्रग नहीं है, वो औषधि नहीं है। सो उसको हम बोलेंगे प्लासिबो। यानी कंट्रोल ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिस पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। और इसके साथ साथ कंट्रोल ग्रुप यही है कंट्रोल ग्रुप। और दूसरा ग्रुप ऐसा होगा कि जिसमें हम कोई ना कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मान लो जो औषधि मैंने बनाई है, जो ड्रग मैंने बनाया है, वो दूसरे ग्रुप को मैं दे रहा हूँ, और उस औषधि से, उस ड्रग से क्या परिणाम हो रहा है उसकी जांच पड़ताल मुझे करनी है। सो दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। सो आई अंडरस्टूड there are 2 types of groups generally in any experiment. One is called control group and the second one is called experimental group. तो 2 ग्रुप मैंने बनाए हैं। 2 ग्रुप में से एक ग्रुप को मैं एक्चुअली वो ड्रग दे रहा हूं और दूसरे ग्रुप को मैं दे रहा हूं लेकिन वो ड्रग नहीं है, वो ड्रग जैसे दिखने वाला या वो टैबलेट या वो कैप्सूल जैसे दिखने वाली कोई चीज है, लेकिन उसमें कोई औषधि नहीं है। तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? कंट्रोल ग्रुप। और जो ग्रुप को एक्चुअली में मैं
कोई ड्रग दे रहा हूँ या कोई औषधि दे रहा हूँ या कैप्सूल दे रहा हूँ, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. सो जनरली इन रिसर्च वी हैव टू ग्रुप्स, वन इज कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. तो ये टर्मिनोलॉजी जान लेना बहुत बहुत जरूरी है. तो अभी तक मैंने 5 टर्मिनोलॉजी देखी. सबसे पहला मैंने देखा कि वेरिएबल्स क्या है, उसके पहला वेरिएबल्स के बाद में मैंने देखा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, देन आई रिफर्ड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है. तो उसके बाद मैंने देखा कि कंट्रोल ग्रुप क्या है, और उसके बाद मैं देख रहा हूं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है. सो फार हैव यू फॉलोड? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? Sir, I have one question. या प्लीज. आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा क्योटिक आ रही है आवाज. हाँ बताइए, पूछिए. ठीक आ रही है आवाज. सर सर सपोज हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका टॉपिक नाम है इफेक्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग मेथड ऑन टीचिंग सोशल साइंस सब्जेक्ट. सर आपकी सपोज आवाज ठीक नहीं आ सो रही है. यहाँ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमारा जो, ठीक है सर. सर आवाज आपकी मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ. इज इट द प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ अस और इज इट द प्रॉब्लम विद मी ओनली? सती मॅडम. मला तर सर क्लिअर येतोय. बट इफ ही हॅव एनी प्रॉब्लेम सर, पोस्ट युअर क्वेश्चन इन अ चॅट बॉक्स. Yeah, madam, if let him post the question in chat box and then you can Yes. answer. Okay. ओके या. सर आपका क्वेश्चन चैट बॉक्स में, या फिर अभी पूछिए जरा, मुझे आवाज नहीं ठीक से आ रही, सुनाई दे रही. येस जय सर. हेलो. ओके सर, Left. तुम्ही. हेलो. Sir, I I am left audible? here. Yeah. Yeah, you can put your question in chat box. Okay. I continue. Sir, sir, am I audible? Now you are audible. Yes, please. ओके सर, सपोज एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं जिसका वो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग मेथड ऑन टीचिंग हिस्ट्री. हाँ. हाँ सर, यहाँ वो जो स्टोरी टेलिंग मेथड, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो रहेंगे उसको हम प्रोवाइड करेंगे. और जो सिंपल ट्रेडिशनल मेथड में जैसे हम पढ़ा रहे हैं, सपोज लेक्चर मेथड, यहाँ हम कह सकते हैं कि वो जो ट्रेडिशनल मेथड और लेक्चर मेथड ये प्लेसिबो है. या ट्रेडिशनल मेथड हम लोग उसको प्लेसिबो नहीं बोलेंगे, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड से ही पढ़ाएंगे उसको. सर ये जो प्लेसिबो का मतलब क्या होता है? हम लोग आने वाले सर, नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू हैव द टर्मिनोलॉजी प्लेसिबो. ठीक है. यस. ओके ओके, वेरी थैंक नेक्स्ट यू. स्लाइड. वेरी नेक्स्ट स्लाइड. राणे, राणे, ती खिडकी बंद कर आणि एसी लाव. त्यांना पण आताच बांबू टाकायची वेळ मिळाली तिकडे. ओके, वी कंटिन्यू. सर आप प्लेसिबो के बारे में पूछ रहे थे. जय सर. येस सर. येस यस सर. सर, यस सर. यस, लीजिए आपके लिए प्लेसिबो. तो प्लेसिबो क्या होता है? इट इज अ इनएक्टिव ट्रीटमेंट, यानी वो ट्रीटमेंट है लेकिन वो इनएक्टिव है. जैसे द एग्जांपल विच आई गिव, I am giving 2 tablets to 2 groups. For one group I have given actually the drug, and for another group I have given the similar looking tablet, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें मेडिसिन नहीं है, उसमें ड्रग नहीं है. So that is called placebo. तो generally what is placebo? It is an inactive treatment given to the control group that mimic the experimental treatment and that isolate the effect of independent variable. तो आपका जो प्रश्न था कि ट्रेडिशनल मेथड को हम प्लेसिबो कह सकते हैं क्या? ओके, तो आप बिल्कुल उसको प्लेसिबो कह सकते हैं, बट दैट इज नॉट समथिंग काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट दैट वी आर गिविंग. वी आर फॉलोइंग द रेगुलर रूटीन टीचिंग. ठीक है. यस सर. ओके, तो हम उसको इनएक्टिव ट्रीटमेंट तो नहीं बोलेंगे, जैसे जनरली दिस वर्ड इज यूजिंग द मेडिसिन. ओके, इनएक्टिव ट्रीटमेंट गिवन टू द कंट्रोल ग्रुप, दैट इज वेरी सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट. ओके, आई होप you are satisfied with my answer, sir. यस सर, यस सर, थैंक यू. Okay, okay, okay. Now let me proceed. जैसे सर, एग्जाम्पल दिया है. हाँ मॅडम. सर मराठीतून पण बोला, मेसेजेस येत आहेत सारखे. मराठीत पण बोलू? बर बर, चालेल. तर आपण प्लासिबो म्हणजे काय टर्मिनॉलॉजी आपण बघण्याचा प्रयत्न केला. प्लासिबो. सो प्लासिबो फॉर एक्झाम्पल in the drug trial the control group gets a sugar pill. तो शुगर कोई मेडिसिन नहीं है. सो दैट लुक्स लाइक आइडेंटिकल टू रियल ड्रग, लेकिन उसका कोई असर होने वाला नहीं है. सो बिकॉज दैट टैबलेट डज नॉट हैव एनी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, दैट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वी हैव इन अ
प्रॉपर ड्रग और प्रॉपर मेडिसिन, आणि म्हणून त्याला आपण म्हटलं प्लासिबो. त्याची टर्मिनॉलॉजी आहे प्लासिबो. नाउ नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. ये ऑलरेडी हमने देख चुके हैं पहले, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. नाउ और एक टर्मिनोलॉजी बार बार आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट. तो इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है? इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन या स्पेसिफिक प्रोसीजर विच इज अप्लाइड टू अ ग्रुप. उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. और वो जो कंडीशन है, वो जो प्रोसीजर है, जैसे अभी सर ने एक एग्जांपल पूछा कि भाई हम स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ा रहे हैं, तो स्टोरी टेलिंग बिकम योर ट्रीटमेंट और स्टोरी टेलिंग बिकम द इंटरवेंशन विच यू एबल टू मैनिपुलेट एज अ पार्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो कोई भी ऐसी एक्शन हो सकती है, कोई भी ऐसा बदलाव हो सकता है, कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है, कोई भी ऐसी प्रोसीजर हो सकती है जिसका परिणाम हमें अभ्यासना है, जिसका परिणाम हमें उसकी जांच पड़ताल करनी है. तो वो जो अभ्यास होगा, वो जो अध्ययन होगा, उसे हम कहेंगे इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट. और जिस ग्रुप को ये दिया जा रहा है, उस ग्रुप को हम कहेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. एंड द अदर ग्रुप टू होम आई जस्ट प्रोवाइड द प्लासिबो, उसको हम बोलेंगे कंट्रोल ग्रुप. Excuse me, sir. Sir, Yes, can I ask my little query is that? yeah, please. So, can I say that directly? Control group, also known as a placebo. No, no. Group is control group. The kind of treatment which don't have any active effect. It is called as प्लासिबो. सो प्लासिबो क्या है? प्लासिबो एक प्रोसीजर हो सकता है, कंडीशन हो सकती है, या ट्रीटमेंट हो सकती है जिसका कोई असर होने वाला नहीं है. अभी क्या होता है, जनरली जब हम दो ग्रुप करते हैं तो दोनों ग्रुप को लगना चाहिए ना कुछ हमें दिया जा रहा है. अगर एक ग्रुप को आप देंगे तो दूसरे वाले नाराज हो जाएंगे, बराबर है ना? तो उनको भी लगना चाहिए कि वी आर एक्चुअली गेटिंग समथिंग, बट दैट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, तो उसको हम प्लासिबो बोलेंगे. वो ग्रुप को हम लोग प्लासिबो नहीं बोलेंगे, बिकॉज प्लासिबो इज एन इनएक्टिव ट्रीटमेंट या इनएक्टिव कंडीशन या इनएक्टिव प्रोसीजर जिसका कोई भी परिणाम एक्सपेरिमेंट पर नहीं होगा. ठीक है, तो ग्रुप को हम कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ही बोलेंगे, उसको प्लासिबो ग्रुप नहीं बोलेंगे. Okay, sir. Thank you. ठीक है, ओके. देन रैंडमाइजेशन, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, वी नीड टू अंडरस्टैंड रैंडमाइजेशन. सो in experiment we have various subjects and we assign those subjects into different groups. हो सकता है वो कंट्रोल ग्रुप है, हो सकता है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, या और भी कई बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं. सो हाउ डू as a researcher I assign the subject? This process of assigning the subject to different group is called as randomization. ठीक है, और ये रैंडमाइजेशन क्यों जरूरी है? सो एज टू मिनिमाइज, सो एज टू रिड्यूस माय बायस, माय प्रेजुडिस अबाउट द डिफरेंट सब्जेक्ट्स. And this process is called as randomization. For example, suppose I want to conduct a study based on the intensity of exercise and weight loss. So participants are randomly assigned to one of the group, maybe control group or maybe experimental group. Without any bias and prejudice, I assign the sample or I assign the subjects to control group as well as in experimental group. So this process is called as randomization. Next, now this is again very interesting terminology we need to understand for preparing the research design, that is called as confounding variable. तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि जानबूझ के नहीं हम लोग उसको इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट एक परिणाम स्वरूप हमको तकलीफ देने के लिए मौजूद होती है. तो ऐसे जो वेरिएबल्स, ऐसे जो घटक है, उनको हम बोलते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल, an external variable that unintentionally affect the dependent variable, potentially it affect our result. For example, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अभी ऑनलाइन बात कर रहा हूँ, आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो सकता है आपके आजू बाजू अड़ोस पड़ोस बहुत सारे लोग मौजूद हो जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो वो लोग जानबूझ के नहीं आ रहे हैं. ठीक है, जैसे अभी हमारा एक नॉन टीचिंग स्टाफ मेरे बाजू में खड़ा है, उसका कोई उद्देश्य ये नहीं है कि मेरे लेक्चर में या मेरे ऑनलाइन सेशन में गड़बड़ी निर्माण करे, लेकिन वो उसके काम से आ गया और हो सकता है कि मेरे इंटरेक्शन में थोड़ी बाधा निर्माण हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? कंफाउंडिंग वेरिएबल. वैसे कंफाउंडिंग वेरिएबल रिसर्च में बहुत सारे हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यूड फॉर 2 years, तो हो सकता है आपका एज ग्रुप इज वन ऑफ द कंफाउंडिंग वेरिएबल, क्योंकि जिस तरह से आपकी आयु बढ़ेगी आपका अनुभव बढ़ेगा, आपका अनुभव बढ़ेगा तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा क्योंकि आप ज्यादा मैच्योर्ड होंगे, तो हो सकता है आपके रिजल्ट इन सब कारणों की वजह से हो और ना कि मेरे ट्रीटमेंट के वजह से हो. सो दीज आर कॉल्ड एज कंफाउंडिंग वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल,
जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि प्रोवाइडिंग द सनलाइट एंड आई वांट टू मेजर द हाइट ऑफ द प्लांट, हो सकता है जाने अनजाने में आपने किसी पौधे को ज्यादा पानी दे दिया है, तो हो सकता है द इंक्रीज इन हाइट, जो जो वृक्ष या जो पेड़ जो पौधा आपने लगाया उसकी हाइट आपको दिखाई दे रहा है कि बढ़ गई है, लेकिन वो सनलाइट की वजह से नहीं बढ़ी होगी, हो सकता है वो आपने जाने अनजाने में कुछ पानी की मात्रा उस पौधे को थोड़ी सी ज्यादा दे दी, हो सकता है वो ज्यादा पानी की मात्रा से उसके हाइट में वृद्धि दिखाई दे रही है और न के सनलाइट के वजह से। तो ये पानी ज्यादा देना इज कॉल्ड एज कंफाउंडिंग वेरिएबल्स बिकॉज इट इज अनइंटेंशनली हैपन। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, कंफाउंडिंग वेरिएबल। Yes, sir. ठीक है, यानी कोई जानबूझ के नहीं हो रहा है, लेकिन अपने आप कुछ ऐसे घटक सम्मिलित होते हैं जिनका प्रभाव मेरे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर या कंट्रोल ग्रुप के ऊपर होने की संभावना बनती है। तो ऐसे घटकों को, ऐसे वेरिएबल्स को हम बोलते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। आई कंटिन्यू। रिप्लीकेशन, रिप्लीकेशन मीन्स रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स। तो जितने बार मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा उतने बार मेरा जो रिजल्ट होगा वो ज्यादा से ज्यादा वैलिड और रिलायबल होगा। दिस इज कॉल्ड एज रिप्लीकेशन। सो द रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स और यूजिंग मल्टीपल सब्जेक्ट टू इंश्योर द रिजल्ट, हो सकता है वो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट आप रिपीट करें या कुछ दूसरे सब्जेक्ट के साथ उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें सो एज टू गेट अ कंसिस्टेंट एंड रिलायबल रिजल्ट्स। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिप्लीकेशन। नाउ ये जो टर्मिनोलॉजी थे, मैंने पूछा कि वेदर यू आर फैमिलियर विद दिस टर्मिनोलॉजी। So this is something new, not new, but we are not aware. This terminology is called as blinding. Blind का मतलब क्या होता है हमें पता है, what is blind। तो ये क्या है, कंट्रोल ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उन लोगों को ये पता नहीं है कि वो कंट्रोल ग्रुप में है या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज ब्लाइंडिंग। आई डोंट नो वेदर आई एम द पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, क्योंकि हो सकता है मुझे पता चले कि मैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हूँ और मुझे ज्यादा उत्साह मुझ में निर्माण हुआ, अरे वाह मैं तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का सदस्य हूँ और आने वाले जो निष्कर्ष है, आने वाले जो रिजल्ट है वो मेरी वजह से आने वाले हैं। सो हो सकता है आई कैन पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट्स एंड मे बी द रिजल्ट्स आर नॉट बिकॉज ऑफ दैट ट्रीटमेंट बट बिकॉज ऑफ माई एक्स्ट्रा एफर्ट दैट आई एम पुटिंग इन, बिकॉज आई बिलीव आई कम टू नो दैट आई एम पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। थोड़ा उत्साह बढ़ गया है, मोटिवेशन हो गया, मोटिवेटिंग खुद को महसूस कर लिया और आने वाले रिजल्ट वो मेरे मोटिवेशन की वजह से है। तो सबसे बेहतर यही होगा कि उनको पता ही ना चले कि वो कौन से ग्रुप में है, वो कंट्रोल ग्रुप में है या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज ब्लाइंडिंग। तो हो सकता है वो पार्टिसिपेंट को भी पता ना हो और हो सकता है वो रिसर्चर को भी पता ना हो, लेकिन रिसर्चर को पता ना हो ये होने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन इन मेडिसिन या इट कैन पॉसिबल कि रिसर्चर को भी पता नहीं कि कौन से ग्रुप वाले लोग कौन है। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज सिंगल ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड। When we say single blind, the participants don't know in which group they belongs, and in double blind even researcher as well as participants both of them don't know the group they are handling is a control group or experimental group, क्योंकि प्लासिबो दिया है ना तो पता ही नहीं कि ओरिजिनल क्या है। This is known only with one or two people, otherwise rest of the co-researcher they don't know whether it is a placebo or actually treatment. So I hope the concept is clear, blinding. Yes, sir. अरे एक का ही आवाज आ रहा है मुझे, बाकी के लोग आवाज क्यों नहीं आ रहा है? Yes, sir. दो ही आवाज आ रही है मैडम, Yes, sir. Yes. रिया सिंह जी की भी आवाज आ रही है। सो आई होप सो फार इट्स क्लियर। Yes, sir. Yeah, we continue with some of the terminology. The next is हाँ, factorial design. So factorial design generally हम लोग factorial design, an experimental design that tests the effect of two or more independent variables simultaneously, including their interaction, is called as factorial design. So basically factorial design हम लोग experimental में use करते हैं. So it is a type of experimental design where two or more independent variables simultaneously tested. Simultaneously, we see the interaction or effect of more than two variables at a time, more than two independent variable at a time. For example, suppose I want to test प्लांट ग्रोथ विद टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो पहले तो मैंने केवल सनलाइट के ऊपर फोकस किया था, लेकिन सनलाइट के साथ साथ मुझे फर्टिलायझर्स का भी देखना है कि जो खाद बोलते हैं हम लोग, खत, तर किती प्रमाणामध्ये ते खत देऊन त्या रोपट्याची वाढ होते किंवा नाही. सो सायमल्टेनियसली आय एम स्टडिंग टू वेरिएबल्स, वन इज सनलाइट एंड सेकंड वन इज फर्टिलाइजर्स. सो देर इज अ जॉइंट इंटरैक्शन. हो सकता है दोनों एक साथ हो तो
उस पौधे की जो लंबाई है वो बहुत जोर से और बहुत तेजी से वो बढ़े. So there can be more than two independent variables. तो एक है sunlight and the second one is fertilizers. And both together I study as an independent variables and including their interaction. So this is called as factorial design. Online चालू है बेटा. हाँ, all the best. The next terminology is blocking. Block तो हमें पता है. We make different blocks. So grouping similar subjects together before we randomly assign that subject. यानी जो सब्जेक्ट है उसको मैंने कंट्रोल ग्रुप में डालना है या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डालना है, वो डालने के पहले उनमें कुछ अगर सिमिलरिटी है, हो सकता है उनकी आयु, हो सकता है सभी के बर्थडे दे आर इन मार्च, तो हो सकता है मार्च में बर्थडे वाले लोग मैंने एक साथ ले लिए, सिमिलर हाइट वाले एक साथ ले लिए, सिमिलर आईक्यू वाले एक साथ ले लिए, या हो सकता है सेम सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले एक साथ ले लिए, या हो सकता है उनके इंटरेस्ट के अनुसार मैंने लोग एक साथ ले लिए. तो रैंडम असाइनमेंट करने के पहले एज अ रिसर्चर मुझे सोचना है द पीपल और द सब्जेक्ट विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक और सिमिलर ट्रेट्स, आई कैन पुट देम टुगेदर. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्लॉकिंग. तो मैं रैंडम, Sir, I have a little query about it. या पूछिए सर. When you say particularly experimental research, can you say that is there any difference when you say the random sampling, randomization, and random assignment? या both all three terms are same. Acha, okay, okay, sir. Good. Thank you, sir. Randomization, random sampling. Random sampling means randomly we select. Now randomization means randomly we assign the subjects in control group. But sir, when you say particularly the true experimental research and quasi-experimental research, randomization we are hugely used in the true experimental research. But when you say the quasi-experimental research, we could not use the randomization. And Yeah, there we use the random sampling. So how both are the same? sir, we are going to have a detailed discussion in true experimental as well as quasi experimental. So there we understand Okay, 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 in okay, sir. what Thank you. sense the true experimental design is different than the quasi experimental design. ठीक है? Yes, sir. I Yes, appreciate your yes, sir. query, sir. Okay. Okay, okay, sir. So far it's clear. Blocking. Blocking is clear. Yes, sir. ओके. तो ये टर्मिनोलॉजी जान लेना बहुत जरूरी है बिकॉज फ्रीक्वेंटली वी आर यूजिंग दिस टर्म इन रिसर्च डिजाइन. ओके, देन कंफाउंडिंग वेरिएबल्स. ऑलरेडी वी हैड डिस्कस अबाउट द कंफाउंडिंग, ये रिपीटेशन हो गया है. एक्सटर्नल वेरिएबल है एंड अनइंटेंशनली इट इज अफेक्टिंग माय रिसर्च. ओके, नाउ फ्यू मोर टर्म्स. मैनिपुलेशन चेक. Now, what is manipulation check? Manipulation check is nothing but it is a method or it is a testing that is used to verify the independent variable was successfully manipulated or controlled as intended, ensuring the intervention had the desired effect on the participation. Okay, तो independent variable क्या है मुझे पता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है मुझे पता है. तो ये मैनिपुलेशन चेक का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेशन चेक का मतलब ये होता है कि मुझे कंफर्म करना है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने उपयोग में लाया उसको ठीक तरह से मैं कंट्रोल कर सका हूं या नहीं कर सका, उसको मैं ठीक तरह से मैनिपुलेट कर सका हूं या नहीं मैनिपुलेट कर सका, जिससे कि मुझे इस बात की शाश्वती, इस बात की बिल्कुल कंफर्मेशन हो जाए कि जो ट्रीटमेंट में दे रहा हूं उसका डिजायर्ड इफेक्ट या द ट्रीटमेंट और द इंटरवेंशन हैड द डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द पार्टिसिपेंट. तो ये मेथड है जस्ट टू कंक्लूड वेदर आई एम एबल टू successfully manipulate the independent variable or not. The terminology is called as manipulation check. For example, in meditation study, the manipulation check might involve asking participant in the experimental group to complete the brief survey after each session to confirm they feel relaxed or focused during the meditation. तो ये confirm कर रहा हूँ कि जो independent variable में उपयोग में ला रहा हूँ उसको ठीक से मैं manipulate कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. And the next terminology is measurement of variable. So we know what is variable. Variable is anything, any characteristics that has a capacity to change for many reasons. So measurement of variable is we measure those variables. So it is the process of quantifying or assessing the variables. So we quantify or assess the variables. और किस तरह से करेंगे हम उसको quantify और assess? By using various tools, various scales, or by various techniques. I measure those variables. So this process is called as measurement of variables, and manipulation check is to confirm whether the independent variable is successfully manipulated or not. So this is again very important term, and I think
18 terms that we have referred to. Some of were repeated. So can you recall some of the terms, at least names, different participant, at least you tell us different terms that one need to understand in any research design. What were the terms? We started with variable, then independent variable, dependent variable. चलिए बताइए और कौन कौन से टर्मिनोलॉजी थी? Control group, Very good. experimental group, Okay. placebo, Very good. control group, experimental, intervention, randomization, confounding, replication, blinding, factorial, blocking, and manipulation. अरे वाह, आपने बिल्कुल सीक्वेंस में बता दिया. स्क्रीनशॉट लिया क्या? Okay, good. So are you with me so far? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Okay. Now, principles of experimental design given by R.A. Fisher. जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का उपयोग करते हैं तो तीन ऐसे सिद्धांत है, तीन ऐसे तत्व है जिनका हमें अनुपालन करना होगा. तो ये जो प्रिंसिपल्स है वो दिए हैं सर R.A. फिशर, रोनाल्ड ए फिशर इज द स्टैटिस्टिशियन. रोनाल्ड फिशर, इन्होंने तीन ऐसे सिद्धांत, तीन ऐसे तत्व दिए हैं जिसका पालन करना किसी भी एक्सपेरिमेंट में बहुत जरूरी होता है. सो दीज आर पॉपुलरली कॉल्ड एज थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. एंड व्हाट आर दोस principles? The principles are replication, the second principle is randomization, and the third one is local control or blocking. So now I need not to explain you what is replication. We understood what is replication: repeating the experiment again and again, or repeating the experiment with different subject group. So this is replication. Randomization is the process whereby I randomly assign the subjects into control group and experimental group. And the local control is blocking. Before I randomly assign the subjects, I take into consideration some known traits or some known qualities by which I can categorize my subjects. ठीक है, इसको भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. So what are the three basic principles? Yes, anyone? रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन, लोकल कंट्रोल. यस, थोड़े इसको विस्तार से देख लेते हैं. प्रिंसिपल ऑफ रिप्लिकेशन क्या है? सो रिप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट और ट्रीटमेंट मल्टीपल टाइम्स अंडर सिमिलर कंडीशंस और विथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स. अभी एक्सपेरिमेंटल यूनिट ये भी एक टर्मिनोलॉजी है. एक्सपेरिमेंटल यूनिट मीन्स द सब्जेक्ट्स in your experiment, or maybe a plot of land can be your experimental unit, or maybe samples. So these are the same things. All together we call it as a एक्सपेरिमेंटल यूनिट. तो एक्सपेरिमेंट को उसकी पुनरावृत्ति करना, उसको रिपीट करना, एक तो सेम कंडीशन यानी सेम सब्जेक्ट के साथ, या फिर आप एक्सपेरिमेंटल यूनिट को बदल के भी उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकते हो. तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंफर्म और टू हैव द मोर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ योर रिजल्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, टेस्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ न्यू टीचिंग मेथड. केवल एक ही क्लास में मैंने कोई न्यू टीचिंग मेथड का उपयोग किया और मैं जग को, पूरे दुनिया को बता रहा हूं कि मैंने एक नई ऐसी एक टीचिंग मेथड की खोज की है जो कि बहुत प्रभावशाली है. यू विल नॉट कंफर्म विद जस्ट सिंगल सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट. हाउ यू कैन रिपीट दिस? यस, एनीवन? हाउ यू कैन रिपीट, हाउ यू कैन apply the principle of replication for testing the effectiveness of a new teaching method? कैसे आप उसको उपयोग में लाएंगे रिप्लिकेशन को? यस सर सैंपल साइज बड़ा करके या बड़ा या छोटा करने की जरूरत नहीं है. आप दूसरे सैंपल के साथ उस ज्यादा से ज्यादा लोगों पे अप्लाई करके. हाँ, आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों पे अप्लाई तो किया, लेकिन उससे बेहतर क्या होगा कि आप दूसरे सैंपल के साथ उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे. मतलब हाँ, डिफरेंट सैंपल्स के साथ. हम लोग पीएचडी में इतना नहीं कर पाते दैट वी रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट सैंपल, लेकिन ये रिप्लिकेशन बहुत जरूरी है. आइदर यू परफॉर्म द, आई मीन रिपीट द एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स with the same condition, with the same sample, or you can utilize different experimental unit दूसरे सब्जेक्ट के साथ, दूसरे सैंपल के साथ. ठीक है, तो ये टीचिंग मेथड आप दूसरे क्लास में जाके ले सकते हो, आप स्टूडेंट्स बदल के ले सकते हो. ओनली थिंग इज यू मल्टीप्लाई और गिव द ट्रीटमेंट मेनी टाइम्स, रिपीट द एक्सपेरिमेंट. सो दिस इज सिंपल principle called principle of replication.
ठीक है। ओके, नेक्स्ट। चलो इसको, ये तो एग्जांपल लिखे हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन। अभी रैंडमाइजेशन ये प्रोसेस क्या है आपको पता है? व्हाट इज रैंडमाइजेशन? यस, व्हाट इज रैंडमाइजेशन? वी डिफाइन दिस टर्मिनोलॉजी रैंडमाइजेशन। बताइए परमिंदर जी, बताइए। सर रैंडमली सिलेक्ट करना सब्जेक्ट्स को, या मतलब सिलेक्ट करना या असाइन करना। ओके, दैट इज कॉल्ड रैंडम। असाइन असाइन करना, यस। असाइन करना। और उसका उपयोग क्या होगा, उसका लाभ क्या होगा? जब आप रैंडमाइजेशन से करेंगे तो आपके मन में कोई भी बायसनेस, कोई भी प्रिजुडिस नहीं होगी कि ये सही यस है सर। या गलत है। ओके, तो हमारी लाइक्स एंड आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स इज नॉट अफेक्टिंग द रिजल्ट्स. So randomization is what? Randomization is nothing but it is the random assignment of the treatment to different group. For example, experimental unit or the random arrangement of experimental condition. This is called as randomization. For example, a drug trial. How you can use principle of randomization for drug trial? दो ग्रुप कर दिए, कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. आप में से जितने लोग कंट्रोल ग्रुप में हैं, वो कंट्रोल ग्रुप को प्लेसिबो दे दिया, कंट्रोल ग्रुप के साथ साथ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ड्रग ट्रायल दे दिया. नाउ यू हैव टू डिसाइड और यू हैव टू रैंडमली असाइन द सब्जेक्ट्स इन कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. ठीक है. One more example, you want to evaluate the impact of extra tutoring on reading skill, whether this extra tutoring affect the reading skills. So randomly आप students को select करेंगे control group के लिए, experimental group के लिए, and then randomly you will provide the extra tutoring. So that is called principle of randomization without any biasness and prejudice. Now these are some of the additional example. Now what is the third principle? First one was Local control. yes, local control or blocking. So what is local control? Local control is nothing but it is a kind of a blocking that involves grouping experimental units into homogeneous groups या blocks. हम लोग इसको भी थोड़ा विस्तार से देखने वाले हैं इस प्रिंसिपल को. यानी असाइनमेंट करने के पहले, रैंडम असाइनमेंट करने के पहले, understanding their key characteristic, understanding their similarity in those different traits or different characteristics or different qualities, उनको हम लोग एक ही ग्रुप में लाने का प्रयास करते हैं. सो उनकी जो विशेषता है, उस विशेषता से उस एक्सपेरिमेंट पर कोई प्रभाव न हो सकता है सभी लोग एक सोशल स्टेटा से आ रहे हैं, तो ऐसे सिमिलर सोशल स्टेटा पीपल का एक एक ग्रुप बना दिया. दूसरा, एक इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग तरीके की होती है, तो अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन वालों का एक ग्रुप बना दिया. यानी एक ग्रुप में समान या सिमिलर इकोनॉमिक कंडीशन वाले लोग आए हैं, तो हमारा जो रिजल्ट है इट इज नॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस. इसके लिए ये लोकल कंट्रोल या ब्लॉकिंग भी बहुत जरूरी होता है. ठीक है. ओके, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स. For example, if I want to investigate how the tablet is technologically of using the tablets in science class enhance understanding compared to traditional textbook, तो मुझे ग्रुप करते समय ऐसे ग्रुप करना है कि जो लोग टेक्नोलॉजी के बारे में दिलचस्पी रखते हैं और जो लोग टेक्नोलॉजी के बारे में दिलचस्पी नहीं रखते. सो आई मेक दिस टू ब्लॉक्स. या हो सकता है कि अगर इस तरह से मैंने ब्लॉग नहीं किया तो हो सकता है आने वाले रिजल्ट इज बिकॉज ऑफ दिस पीपल हैव मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी. तो मेरा जो एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ टैबलेट, बट दैट इज बिकॉज दिस पीपल आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी. तो ये अवॉइड करने के लिए मैं ब्लॉकिंग या लोकल कंट्रोल का सहारा लेता हूँ. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. पॉइंट इज क्लियर. Yes, sir. संतोष सर. Yes, sir. ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? वी स्टार्टेड विथ व्हाट इज कॉल्ड रिसर्च डिजाइन क्या है,
Then we referred what are the characteristics of good research design. Then we also referred what is the need to have the research design. Then we referred important terminologies. Then we referred the three important basic principles. By the way, किसने दिए हैं तीन principles? Who is the statistician? Fisher. R.A. Fisher. R.A. Fisher. वेरी गुड, वेरी गुड। आप बता रहे यानी आप सब मेरे साथ हो। वेरी गुड। चलिए, आई जस्ट कीप सम ऑफ द एग्जांपल्स. So basically this blocking is also very important. Now we referred 7 different ways by which we can classify the research design. आपको याद है कुछ पर्सपेक्टिव जिसके आधार पर हमने इस रिसर्च डिजाइन का वर्गीकरण किया था? एटलीस्ट 1 or 2. यस सर। हाँ बताइए, कौन सा याद है आपको सर? सर, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कंट्रोल, वेरी गुड, एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, वेरी गुड, क्वासी एक्सपेरिमेंटल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस तरह के 7 विविध अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सपेक्टिव थे बेस्ड ऑन विच वी क्लासिफाई द रिसर्च डिजाइन. चलिए, तो ये बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कंट्रोल, दिस वाज द फर्स्ट वे टू क्लासिफाई. और कौन से 3 प्रकार थे? यस, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कंट्रोल. Pre-experimental, true experimental, and quasi-experimental. वंडरफुल. व्हॉट्स युअर गुड नेम मॅडम? Aparna Patil. अपर्णा पाटील, अभिनंदन. खूप छान तुम्ही सांगितलं. हेच 3 प्रकार आहेत. फर्स्ट वन इज प्री एक्सपेरिमेंटल, सेकंड वन इज ट्रू एक्सपेरिमेंटल, एंड थर्ड वन इज क्वासी एक्सपेरिमेंटल. सर आप पूछ रहे थे ना? सती मॅडम काय नाव होतं सरांचं त्या? जय सर. जय सर, you were asking me about this? Yes sir. And what is the difference between true experimental and quasi experimental design? So let us understand this experimental design. So this classification, that is pre experimental, true experimental या quasi experimental, ये क्या है थोड़े विस्तार से जान लेंगे. But this classification is purely based on the degree of control. To what extent I am going to control. चलिए देखते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. सबसे इजीएस्ट, सबसे सिंपल जो डिजाइन है उसको हम बोलते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. इनफैक्ट इज नॉट अ डिजाइन एट ऑल. क्यों? बिकॉज नाउ व्हाट डज प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मीन? प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च डिजाइन. बहुत ही सिंपल है. क्यों? बिकॉज दे डू नॉट इन्वॉल्व रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू ग्रुप्स एंड टिपिकली लैक कंट्रोलिंग द ग्रुप. कोई ग्रुप नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है. So these designs are often used for exploratory research when it is not feasible to conduct more rigorous study. तो कोई भी इस तरह से रैंडम असाइनमेंट नहीं है, यानी कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, एंड कोई कंट्रोल ग्रुप है ही नहीं. केवल कुछ स्टूडेंट आपके साथ है और आप देखना चाहते हैं कि भाई जो ट्रीटमेंट आप दे रहे, मान लो मोटिवेशन देने से उनका होमवर्क का जो द क्वालिटी ऑफ होमवर्क, वेदर द क्वालिटी ऑफ होमवर्क इज एनहांस और नॉट. तो यू पिकअप फ्यू स्टूडेंट्स इन योर क्लास, उनको थोड़ा एक मोटिवेशन देते हो कि भाई अगर आपने ठीक तरह से होमवर्क किया तो हो सकता है कल हम आपको कुछ चॉकलेट्स देंगे. सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट चॉकलेट आप देखते हैं कि वेदर द क्वालिटी ऑफ दैट होमवर्क इज इनॉन्स और नॉट. तो कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है, लेकिन आपने एक्सपेरिमेंट जरूर किया है. सो दिस एक्सपेरिमेंट वेयर यू डोंट हैव एनी रैंडम असाइनमेंट, वेयर यू हैव ओनली वन ग्रुप, तो उसको हम कंट्रोल ग्रुप है ही नहीं. तो ओनली अ सिंगल ग्रुप और सिंगल ग्रुप ऑफ पीपल एंड विदाउट एनी रैंडम असाइनमेंट जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो. सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कॉल्ड प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. इज दैट क्लियर? यस सर. आप फ्लो चार्ट डेवलप करने को शुरू करो. फ्लो चार्ट मुझे चाहिए. आई वांट टू सी द फ्लो चार्ट एंड यू विल स्विच ऑन योर कैमरास एंड यू विल शो द फ्लो चार्ट प्रिपेयर्ड बाय यू. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? रैंडम सैम्पलिंग इसमें है क्या? बिल्कुल भी नहीं है. नो रैंडम असाइनमेंट. जो कुछ मेरे सामने है उनको लेके मैं आगे बढ़ रहा हूं. सो देयर इज नो रैंडम असाइनमेंट. देन whether I have the control group? No. Generally 99.99% in pre-experimental group we have only group of people or few students or few samples. तो उनको हम लोग बोलते हैं a group of people, not the control group. Then limited ability to infer the causality, क्योंकि रिजल्ट जो होंगे वो रिजल्ट बहुत ज्यादा वैलिड होने वाले नहीं है, एंड देयरफॉर वेरी लिमिटेड एबिलिटी टू इन्फर द causality. For example, let us take one example.
a researcher want to evaluate the effectiveness of new teaching method on student performance. आपने कुछ नहीं किया, आपके सामने जो बच्चे बैठे थे उनको आपने पकड़ा और उनके ऊपर वो मेथड यूज किया एंड यू जस्ट टेस्टेड देयर स्कोर बिफोर एंड आफ्टर द इंटरवेंशन. तो कोई कंट्रोल नहीं था, कोई रैंडम असाइनमेंट नहीं था, एंड देयरफॉर द काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट यू यूज्ड is called as pre-experimental or the experimental design is called as pre-experimental research design. Is that clear? Clear? Yes, sir. Clear. Okay, चलिए आगे चलते हैं. Pre-experimental design. What is the next type? True experiment. Very good. True experimental. True experimental research design. So this is the second, and this classification is based on which criteria? What is the Sir, criteria? based on degree of control. Yes, yes, Actual. yes, degree of control. Now, true experimental research design. अभी ये क्या है? Now, true experimental designs, these are characterized by random assignment of participant to different groups. So in earlier case, there was no random assignment. There was no control group. Now exactly opposite है यहाँ पे. It is called true experimental design because the assignment of subjects are done randomly to different groups. For example, experimental group में and control group में. Now this design allows the researcher to establish the cause and effect relationship more confidently. Now this design is called as the gold standard for establishing the cause and effect relationship, because without any bias and prejudice in mind, you randomly assign the participants into different groups. Now what are the characteristics? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि इसमें रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स है. Second characteristics, here we have two groups, so we have the control group as well. And the third, high internal validity, because we try to maintain the random assignment to different groups, and therefore we have the high internal validity in this particular design. For example, let us take the same example. Suppose I want to test the new drugs effectiveness in reducing the BP. ब्लड प्रेशर के लिए कोई दवाई बनाई है और वो दवाई वो ड्रग वो कितना प्रभावशाली है, किसके लिए? ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए. मुझे इसका एक अध्ययन करना है. तो कैसे करूंगा? आई रैंडमली असाइन पार्टिसिपेंट्स इनटू टू ग्रुप्स. वन ग्रुप रिसीव्स द ड्रग्स एंड सेकंड विल रिसीव द सिमिलर ड्रग. तो उसको क्या बोलेंगे हम? दूसरे ग्रुप को हम लोग एक सिमिलर ड्रग दे रहे, बट दैट इज इनएक्टिव एलिमेंट है, उसमें शुगर कोटेड है. उसको क्या नाम दिया था हमने? Sir, placebo. Yes, Placebo. placebo. The second group receives the placebo. अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल क्यों है? बिकॉज रेस्ट ऑफ द अदर फैक्टर्स आई हैव कंट्रोल. सबसे इंपॉर्टेंट डाइट भी मैंने कंट्रोल किया है उनका, या उनका एक्सरसाइज पैटर्न भी कंट्रोल किया है. दे आर हैविंग द सिमिलर एज ग्रुप. क्योंकि हो सकता है जो ब्लड प्रेशर कम हो रहा है वो बिकॉज ऑफ देयर डाइट और बिकॉज ऑफ देयर रेगुलर योग प्रैक्टिस और बिकॉज ऑफ देयर रेगुलर एक्सरसाइज प्रैक्टिस और बिकॉज ऑफ देयर डिफर इन देयर एज ग्रुप. जिनका आयु थोड़ी कम है उनका बीपी थोड़ा नॉर्मल होने की संभावना बनती है. तो अगर इन फैक्टर्स को कंट्रोल किए बिना अगर मैं दावा कर रहा हूं कि ये दवाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एक प्रभावशाली दवा साबित हो रही है, तो हो सकता है मेरे रिजल्ट इतने सही नहीं हो. तो वहां पे मैं कोई अलग डिजाइन यूज कर रहा हूं. लेकिन जब मैं all other factors like their regular daily schedule, their diet, their exercise, their regular yoga practice, their age, their style of living, everything I try to control, तब जाके मैं ये कह पाऊंगा कि जो ब्लड प्रेशर कम हो रहा है वो ब्लड प्रेशर उस दवाई की वजह से कम हो रहा है. So why it is called true experimental design? Because I try to give the random assignment of the subjects. There is a presence of control group, and along with that everything else like their diet, their exercise, their age, etc., I controlled. And then I can then I can compare the two groups, the blood pressure of control group participants and blood pressure of experimental group. So I hope you got the point. True experimental research design. Yes, sir. हाँ, तो जनरली yes. आप सती मॅडम काय विचारायचंय?
नाही सर, नाही, मी ऐकते. Okay. So I hope you understood why it is called true experimental design. Not just it is random assignment or presence of control group, but majority of the factor which may influence my result is controlled. तो डेफिनेटली तो इंटरवेंशन का ही प्रभाव या इंटरवेंशन का ही परिणाम मेरे रिजल्ट पे है, ये मैं दावे के साथ कह पाता हूँ. एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. अभी आप मुझे बताएंगे एजुकेशन में कैन यू कंट्रोल द डाइट ऑफ योर लर्नर? कर पाएंगे आप? No, no. No. So can you control their experiences? No. Can you even control their routine life? No. So generally in education, we are not able to have this true experimental research design. So the most popular design you already mentioned. So what is the most popular design in that case? Quasi experimental. Yes. तो आपको quasi experimental का उपयोग भी समझ में आया, because some of the factors or majority of the factors I cannot control. And therefore, I don't say it is a true experimental. It is similar to true experimental, but not real true experimental. It is quasi experimental research. Sir, I have a Yes, madam, please. I have a question. While doing the research on educational institutions, in case if we are making policies, won't this technique will be used for making the policies, educational policies? For making the educational policies? Yep. Or you want to see the effect of that educational policies on two different? No, sir. For making the educational policies. No, for making the educational policy, we don't just refer few students, no, or few samples. We have, because the policy is going to implement across the country. Let us take example of NEP 2020. Now this document is only 66 pages document in English version. But believe me, 5 to 6 years were spent for getting the ground reality across the country. And then the policy was in draft form. Then we received lot of comments, lot of suggestions, and then after we are having this policy. So policy के लिए experimental या control group का उपयोग नहीं होगा. Yes, that's what I want to understand, because I'm seeing there are the control parameters, multiple control parameters on this. So it's definitely differ from the policy making issues. Yes. I hope you are satisfied. Yes, I am. Thank you. In fact, we can check the effect of this policy on different groups. Okay? Yes, okay. Definitely. Yeah. So now let us move ahead. Quasi experimental research design. So definitely it is not the true experimental, but it is very close to, it is similar to, like true experimental, but definitely not the true. And the most popular design that we employ in education is the quasi experimental. And this name is not full name. In fact, we are going to add few more words. When we refer to that, I will get to you. Okay. Now, what is quasi-experimental design? So, quasi-experimental design resemble very close to true experiments, but lack random assignment. This is the first, that we lack random assignment, or maybe to moderate extent, we randomly assign the subjects. So, these designs are often used in real-world setting where randomization is not possible. While they can provide the valuable insight, but they are more susceptible to the compounding variables. And what are the compounding variables? For example, in true experimental design, we try to control their exercise pattern. We try to control their diet. We try to control their regular habits. So all these things may not possible in real world setting. And therefore, we use a very close to true experimental design. That is a quasi-experimental design. Now, what are the characteristics? No random assignment or partial random assignment in certain cases. And may have a control group or may not have the control group. This can happen with a single group design also. And moderate internal validity. There was high internal validity in true experimental. There was zero internal validity in the first type, that is pre-experimental. And in quasi-experimental, it is neither very low nor very high. It is moderate. Now, for example, madam, the same example. Now you ask me about the policy. What's your name, madam? Sir, Bhavna Agrawal.
Yes. क्या नाम सुनाई नहीं दिया मैडम, बोलिए. Bhavna. Yes, Bhavna madam, will you please read this example? Researchers want to evaluate the impact of a new educational policy implemented in one of the school district on student achievement. They compare the test score of the student in the district and that adopted the policy, experimental group with those in the neighboring district that did not adopt the policy. That is the control group. Yes. Since the groups were not randomly assigned, other factors, that is sociometric status, teacher quality, these are the two factors, may influence may, the order of to establish the clear cause and effect of the relationship. I hope you got the point. Yes, I did. Okay, so maybe the outcome is not just because of that educational policy. हो सकता है socio-economic status, maybe the teacher quality, maybe the school quality, or the quality of the education, or the kind of facility that is being provided to that particular district. These are all confounding variables that may influence the results. And therefore, it is not the true experimental, because these things I'm not controlling or not possible to control in real world setting, and very close to true. It is not true, but very close to, resembling to true experimental, and hence it is quasi experimental, which is very popular in education or in social sciences. Shall I go? Shall I proceed? Yes, please. Now we will try to see the comparative chart of these three types in nutshell. Random assignment, no. Yes, random assignment taking place in true, and in quasi, no. Or to some extent we can, but generally no. Control group, pre-control group is absent, true control group is definitely there, and in quasi it may or may not. And I wish if you can read this comparison in mind, and that will make clear the pre, true, and quasi experimental design. But sir, I have a question. Yeah, please, sir. Sir, when you say the quasi-experimental research, we could not allow to randomization. There is no randomization. So if we are not use the randomization of quasi-experimental research, so the quasi-experimental research comes under the quantitative research, quantitative method. So when you say the quantitative method, so which sampling technique we use when we are choosing the groups? But in the quasi-experimental research design, which sampling technique we can use in particularly this quasi-experimental research design? Yes, a good question, sir. We know there are two basic types of sampling techniques in general. What are those two types? Probability and non-probability. Probability and non-probability. तो हम yes. quasi experiment करते हैं तो हम लोग generally which method we employ? Generally probability sampling होना चाहिए था, but here the randomized होना चाहिए था और एक्चुअली होता है, उसमें अंतर है सर. फॉर पीएचडी पर्पस जनरली वी नो व्हाट काइंड ऑफ सैम्पलिंग वी यूज. वी मे यूज एनी टाइप, बट लिखते समय हम लोग कुछ अलग ही लिखते हैं. ऐसा होता है ना? yes. हाँ, सो इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव द रैंडम असाइनमेंट. लेकिन अगर मेरा पीएचडी है तो मुझे पता है कि भाई ये स्कूल का मुझे ये क्लास चाहिए, तो वहां तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी वाला होता ही नहीं है, वो तो प्रोबेबिलिटी वाला ही होता है. या ये थोड़ा मेरा डाउट है. अगर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इधर यूज करेंगे तो फिर हम तो रेंडमाइजेशन नहीं है ना. रेंडमाइजेशन नॉट पॉसिबल इन द क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. If the randomization not possible, how could you use the probability sampling? If you are not using the probability sampling, then we also can't use the non-probability sampling here. Then that's the confusion.
No, sir, you are confusing. I mean, you are mixing two different terminology, sampling and random assignment of the subjects. क्योंकि sample मेरे पास है, तो उस sample में से control group में कौन जाएगा and experiment के लिए कौन जाएगा. इसमें this is called random assignment. पूरे total. Yes. Now we'll come to your doubt, sir. We have the different types of these examples. We'll come to that. Okay, sir. We'll definitely come to this point once again. So far it is clear, pre, true and quasi. Yes, sir. Yes. चलिए आगे चलते हैं. Okay, types of costly experimental design. Now the costly experimental designs are also of different types. So the most popular is we are going to discuss. For example, costly experimental research design, which is very close to true experimental design, where randomization is not possible. Complexity is moderate. So there are actually 5 types of costly experimental design. The first one is called as non-equivalent group design. The second one is called as pre-test, post-test design. As we mentioned, control group हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. So in case we have the control group, we have the true groups. अगर नहीं है तो we have only one group, and on that group we perform pre-test and post-test design. So that is also kind of quasi experimental design. Then time series design is the third type. The fourth one is interrupted time series design with comparison group. The fifth one is regression discontinuity design, and the last one is counterbalance design. So even in quasi experimental research design, we have 6 types of research design, or at least 6 types which I know. So these are the 6 types, and out of which is the most popular? Which is most popular? Yes, please. Answer. Pre-test, post-test. Yeah, pre-test, post-test, or generally we don't. Generally in PhD we don't recommend with a single group. We prefer 2 groups. So in that case, the most popular, most common is non-equivalent group design. ठीक है? Non-equivalent group design. तो चलो आज कम से कम इतना तो पता चला कि quasi experimental की भी अलग-अलग प्रकार है, और उसमें से generally in education or generally in social science, I recommend or I use non-equivalent group design, which is a type of quasi experimental research design. ठीक है? और इक्विवेलेंट ग्रुप करेंगे तो इक्विवेलेंट ग्रुप करना के लिए अलग अलग तरीके हैं, स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन फिर भी हम दावा नहीं कर सकते कि दैट टू ग्रुप्स आर एब्सोल्युटली इक्विवेलेंट, and therefore we say that non-equivalent group design, because everything we try to control, we cannot control the pre-experience of the participants or the subjects. तो किसी भी तरह उनका पूर्वानुभव हम समान लेवल पे समान तरीके से बांध नहीं सकते, and therefore it is non-equivalent. Both the groups are non-equivalent. तो चला देख लेते हैं नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन क्या है. So non-equivalent group design. So what is non-equivalent group design? It is a type of quasi experimental design. So this design include both. Yes, it has both experimental group भी है और control group भी है. But participants are not randomly assigned to these groups. The control group is used to compare outcomes with the experimental group. So उसको हम बोलेंगे non-equivalent group design. Now what are the key features? There are 2 groups, a treatment group and a comparison group. So treatment group and comparison group is nothing but experimental group and control group. Then no random assignment because it is a quasi. Then we generally employ pre-test and post-test in quasi experimental. Then let us take an example. Suppose we want to evaluate a new training program and its effectiveness of new training program for the employees. तो कैसे करेंगे? quasi experimental non-equivalent group. One department, maybe HR department, receives the training, so HR department is our experimental group, and another department, for example, while a similar department does not receive the training, serves as the control group. So 2 डिपार्टमेंट ले लेते. एक डिपार्टमेंट मान लो आपने ले लिया HR ग्रुप का डिपार्टमेंट ले लिया, और एक डिपार्टमेंट ले लिया से सेल्स ग्रुप का एक डिपार्टमेंट ले लिया, उसको कोई भी इस तरह का ट्रेनिंग नहीं दे दी, and then we compare the performance of these 2 departments. So we are employing quasi experimental design.
So testing a new teaching method in one school and comparing the results with another school that continues with the traditional method, we are employing quasi-experimental design. So basically two group तो होने ही है, random assignment possible नहीं है, and we generally employ pre-test and post-test. Is that clear? Non-equivalent group design. Yes, please. Yes, sir. Okay. I proceed. Other types of quasi-experimental design. I will not go in detail with this different types of experimental design because generally we don't use, but at least we'll just brush up these designs. Pre-test, post-test design, ये तो आपको पता ही है, pre-test, post-test design. The same group is observed before and after the treatment or after the intervention, and we see that is there any difference between the pre-test conditions and post-test conditions. So this is pre-test, post-test design. तो इसमें तो सिंगल ग्रुप ही है, दो ग्रुप है नहीं. Pre-test, post-test treatment is given to the single group, and we lack comparison group, that is we lack control group. तो ये हो गया quasi experimental pre-test post-test design. Time series design. Now what is time series design? You take multiple measurements over a time before and after introducing the treatment, all within a single group. So there is no comparison group, but the repeated observation help to spot the different changes, and if the treatment disturb the pattern, you come back to your original. So it's a great for seeing the changes over the time, but can't be fully rule out the external events that causing the shift. So this is called time series design. For example, we want to see if a new traffic law reduces the accident. So whether the new traffic rules and the number of accidents in a city. So we track monthly accident rates for last 6 months before the law and then after implementing the law. So we are having the time series design. We are employing the time series design. तो लॉ लाने के पहले 6 महीने क्या हालात थे, लॉ आने के बाद आगे चल के 6 महीने तक क्या हालात है, इसका अनुसंधान करने के बाद पता चलेगा कि न्यू ट्रैफिक रूल्स हेल्प टू प्रिवेंट एक्सीडेंट और एक्सीडेंट बढ़ गए. So we are employing time series design. I hope the example is clear. Sir, can we not use this particular time series design in classroom as well? Because in case if the particular guideline has been given, so the observation can be drawn before the guideline was driven, and then observation can be drawn after the guideline that has been given to a particular class. Yes. So observation should be done before and after the treatment. ठीक है? So you are right. Yeah, I thought so. I should share. Thank you. Yeah. Only thing is, it should be continued before and after the treatment. Yep. Yes. Okay, this is times. In education, we don't use this. Generally, we don't have the time to use this time series design. But for different social cause, yeah, this is very important and maybe used. Then third type is interrupted time series design. So what is interrupted time series design? So this builds on the time series idea by adding a comparison group. तो वहां पे दो ग्रुप लगा दिए. टाइम सीरीज डिजाइन में दो ग्रुप नहीं थे, एक ही ग्रुप का प्री एंड पोस्ट. Okay, so you measure both the groups repeatedly before and after the treatment. So this is called interrupted time series design, but only one gets it. तो हो सकता है दो ग्रुप जैसे कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं, तो यहाँ पे भी दो कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कर दिए. उनको हम कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नहीं बोल रहे हैं, बट वी हैव ओनली टू ग्रुप्स एंड साइमल्टेनियसली वी ऑब्जर्व द ट्रीटमेंट विद दिस टू ग्रुप्स विद अ कंटिन्यूएशन ऑफ द टाइम. So this is called as interrupted time series design. We generally don't use in education this interrupted time series design. And what is the difference between time series design and interrupted time series design? Here we have two groups, whereas in earlier case it was only one group. And of course, multiple observation over a time. There also multiple observation over the time before the treatment and after the treatment. So here the treatment is given only to one group. In earlier case, there was only single group. So that is the main difference between time series design and interrupted time series design. ठीक है?
Now, the next type is regression discontinuity design. We don't use this research design, but again, very interesting type of quasi-experimental design. So this is a very clever idea. Now you assign treatment based on certain cutoff score, yeah, certain cutoff limit, yeah, certain criteria on some continuous variable like a test or income level. So everyone above that cutoff will get the treatment. Everyone below will not get such treatment. Then you compare outcomes near the cutoff. It's strong design to decide the casualty if the cutoff is strict and unrelated to other factors. So थोड़ा मैनिपुलेशन हम इसमें करते हैं कि we decide certain benchmark and below that benchmark and after that benchmark we compare. So uh, we draw the regression line below and after. For example, a scholarship program aid to the students scoring about the 80 on a placement test. Researcher compares college grades of students scoring 79, that is without aid, and 80 and above is with aid. So if the 81 group does better, the scholarship might be. Why? Assuming scores near 80 don't differ much otherwise. So we as a researcher decide the regression point. Uske pehla and uske baad. For example, those who got more than 80%, they will get the scholarship, and below that will not get. And then we compare their results in future. So we call it as a regression discontinuity design. Next, counterbalance design. Now in counterbalance design, when we want to test multiple treatments across the groups and each group gets every treatment but in a different order. So we change the order. It controls for order effects, for example, like practice or fatigue, that can have the effect or that can have the influence on the result, but we try to control it, but still lacks random assignments since groups are pre-existing. So this is called counterbalance design. For example, we'll take the example: two factories test two productivity strategies, strategy A and strategy B. Now factory 1 does A and then B, and factory 2 does B first and then A. Output is measured after each. So we counterbalance the treatment, we counterbalance the strategy A and B, and in other case B and A, and then we see the comparison. We see the comparatively who is doing better. So if consistently boosts the output, we can say that the strategy A is effective. And likewise, can you give me the example in education where we can employ this counterbalance design? I want example from education. I hope you understood this counterbalance design. Give me the example from education. So if no one else will give, then I will give. Yeah, madam, please. All are welcome. Example from education. I hope you followed this counterbalance design. I did. Yes. Yeah, we just change the order. Yeah. See, there are, if I will take mathematical, if I'm teaching mathematics, and if I have to teach a plus b whole square is equals to a square plus b square plus c square plus 2ab, if I have to teach that, I have two methods of teaching: by arranging the square and giving them vertical way, or I have to draw two squares, different squares, and add in them. So these are the two examples I can simultaneously use, or I can use first example, see the result. If it is not effective, then I can use the second example if I am correct. Whichever will give the higher result, I'll take the method of teaching. Yes. So if there are two ways of teaching, so I teach one group with the first method and then second method, and to other group with the second method first and then the first method, and then I compare. So anyhow, I counterbalance both the methods. So you are correct, madam. Shall I proceed? Yes, please. Yeah, thank you. Now, in nutshell, so all these are types of which experimental design?
All these were the types of which experimental design? Quasi experimental design, and which is most common, most prominent. Now we will not say quasi experimental. We are using one type of quasi experimental design, and what is that? Yes, Sati madam, आहेत का गेले? Yes, sir. What is the type of quasi that we use most commonly? Sir, non-equivalent. Yes, yes. So not just quasi experimental, non-equivalent group quasi experimental design. Wonderful. So in nutshell, these are just comparison chart I have prepared, so you can refer to it. Non-equivalent group, time series, interrupted time series, pretest, post-test, regression, discontinuity, and counterbalance. So of course we don't require all these. We are just most of the time use non-equivalent group design. Okay. So I proceed further. So classification of research design based on the purpose. So earlier was classification based on the control, true experimental, quasi-experimental or pre-experimental design, random assignment. Now this is based on purpose, and the types were descriptive design, causal comparative design, and exploratory design. So definitely these are used for descriptive type of research, causal comparative type of research, and exploratory type of research. So research design for descriptive research design for causal comparative research, and research design for exploratory research. So what are the types? We just refer to this research design based on the purpose. The first one is called as descriptive research design. Now what does descriptive research design means? The research design that describes a situation, group, or phenomena as it is, without any manipulation, without anything or digging into causes. It's like taking the snapshot, what exists, what is there. You observe, you measure, and you report. It's a great for answering what type of question, but does not explain why or test the hypothesis. So it is called as descriptive research design. So what it is and not why. For example, what are the key features? No manipulation of variables, because we are mentioning the variables as it is. Focus on the observation and measurement rather than manipulation, and often uses the surveys, interviews, and observation for data collection. Now let us take the example descriptive research design. A researcher wants to know the study habits of the college students. Now, as a researcher, survey 500 students about how many hours they study, where they study, and what tools they use for study. For example, notes का use कर रहे, apps का use कर रहे, technology का use कर रहे, या chat GPT जैसे AI models को use कर रहे. Now the result is a detailed profile, and 60% say 60% study 10 to 15 hours a week, mostly in libraries, but there is no attempt to link this to the any grade or to any of their progress. So we just mention the facts. We just describe the situation, and therefore we just try to answer the question what and not why. So this is the simple type. It's called as descriptive research design. Second type, it is called as exploratory research design. Now let's figure out what's going on approach. It is based on, let's know what is going on. It is used when you are venturing into an uncharted territory, little known about the topic. So you were exploring to the generate ideas, hypotheses, or questions for future research. So it's very flexible, open-ended, and does not aim for definite answer, just the insight. Think of it as laying the groundwork. And what are the key features? Flexible methods. So you can use interviews, you can use focus group, or you can just have the literature reviews, and you explore more and more ideas. No strict hypothesis required for exploratory research design, and we seek the pattern or ideas. We want to explore those patterns or ideas. For example, let us understand the example, and we'll come to know what is the difference between descriptive and exploratory. For example, a technology company wants to understand
how people feel about the virtual reality in education. So it's just to know the feelings of the people about the virtual reality. So they start with no assumptions and conduct an open-ended interviews with say 20 teachers asking about their experience, their concerns and hopes for virtual reality. One teacher mentions virtual reality helping shy students to engage. Another worries about the cost. So these insights sparks the hypothesis like VR boosts the participation, or it's all about you are discovering something new ideas. So we just explore. I think with the example, you understood the exploratory research design. So there is no strict hypothesis and methods are very flexible. So you can conduct the interviews, or you can just refer the literature, or you can interact with the focus groups without any strict hypothesis, and you just want to explore the patterns or ideas. So this is the second type based on the purpose. The first one was descriptive, the second one is exploratory, and the third one is causal comparative research. This is also called as ex post facto research, and in ex post facto research we employ this causal comparative research design. Now this design looks for the cause and effect. In description, we don't get cause and effect relationship. In exploratory also, we don't get any cause and effect relationship. So we try to establish the cause and effect relationship after the happening, after the fact, comparing the groups that they already differ in some variable. We don't manipulate anything. Instead of that, we study the existing difference to draw the conclusion what might have caused them. So it's a quasi-experimental design, but related to naturally occurring conditions rather than control intervention. For example, no manipulation, compare pre-existing groups, and retrospective analysis, because incidents have already happened. So it's a retrospective analysis, often uses statistical control. Let us understand with example. A researcher wonders if smoking affects the lung capacity. So we compare two groups, 100 long-term smokers and 100 non-smokers. So we match for their age and their fitness, and then their lung capacity is measured. Lung capacity is measured for 100 people who are chain smokers, and lung capacity those who are not smokers. And it is found that lung capacity of the chain smoker is very low, whereas lung capacity of non-smoker is high. So already incident have taken place. So we can establish the relationship, cause and effect relationship, that chain smoking minimizes the lung capacity or vice versa. ठीक है? I hope you understood these three types: descriptive, exploratory, and causal comparative. So these are three types based on the purpose. So we saw based on the assignment or controllability based on the purpose. Now we move ahead. Experimental research design classification based on level of randomization. Any recall about what are the 3 or 4 types of experimental research design based on randomization? Yes, anyone? May I, sir? Yeah, please. First is completely randomization designing. Yes. Randomized block, Latin square, and match pair design. Wonderful, wonderful, great. चलिए 4 जो प्रकार थे based on randomization. First one is called as completely randomized design, CRD. The second one is randomized block design, RBD. The third one is Latin square design, LSD. And the fourth one is match pair design. So based on the level of randomization, we have 4 types of experimental research design: completely randomized, randomized block design. अभी blocking क्या है आपको पता है? We understand the terminology block या blocking. Then the third one is Latin square, LSD, and the fourth one is match pair design. Now let us explore this in detail. Now these are experimental research design based on the level of randomization. To what extent we are randomly assigning the subjects.
ओके, अभी मैं आपको पिक्टोरियली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस, सो प्लीज हैव अटेंशन. नाउ व्हाट इज देयर ऑन योर स्क्रीन? What is there on your screen? Sati madam, तुम्ही बोला ना. हाँ सर. Yeah, what is there on your screen? What is visible to you? Yes sir. Wait. It's experimental unit subjects. Yeah, experimental units or subjects. Now what I am going to do with these experimental units or subjects, I am going to, you answer madam, what you are going to do? Randomly assign sir. Yes, you are going to randomly assign into group 1 and group 2. Yes. Without any bias and prejudice, you randomly pick up 4 subjects. Yeah, few subjects, yeah, 50% subjects for first group and 50% subject for the 2 groups. So without any predetermined criteria, randomly I group the experimental units or subjects. Now, the treatment 1 is given to first group and treatment 2 is given to second group. Maybe as very common example, we are using the 2 different methodology. Maybe with one group I teach with one particular method and with the other group I teach with some other method. So the 2 different treatments are given to 2 different groups, and those 2 different groups were picked up randomly because it was a random assignment. And then finally I compare the result. I hope you got the idea in nutshell. Yes. Yes, sir. So this method, yeah, this research design is called as completely randomized design, CRD. So I experimental units or subjects I randomly assign to group 1 and group 2. Then I give the treatment 1 to one group, treatment 2 to another group, and then I compare the result. So this is called as completely randomized design. Now let us see technically, literally, what does CRD means. So it is a completely randomized design. It is a type of true experimental design where the participants or subjects, that is experimental units, are randomly assigned to different treatment groups without any restrictions or without any blocking. तो कोई blocking हम लोग नहीं कर रहे. मिक्स है वो, जेंटलमैन भी है, जेंटल वीमेन भी है, मेल भी है, फीमेल भी है, अलग अलग स्टेटा के लोग भी हो सकते हैं. So without any blocking, I randomly assign those people into different groups without any restriction, without any blocking, and therefore it is completely randomized design. Key features क्या क्या है अभी इसके? Random assignment. Each participant or experimental unit has an equal chance of being assigned to any treatment group. अभी मुझे पता नहीं था कि treatment एक group 1 को मिल रहा है या group 2 को मिल रहा है. So it was a random assignment, and randomly I decide to give the treatment to either of the group. So it is characterized by random assignment and no blocking. There is no predefined criteria to further group the experimental units or subjects or participants into different groups or different blocks. All are treated ideally, all are treated similarly, all are treated identically. And simplicity, it's easy to implement and analyze statistically. So this is called as completely randomized design, CRD. Now, effect of teaching method on students' performance. So how I'm going to conduct the CRD to understand the effect or to study the effect of teaching method on student performance. So what is my objective? Objective is to determine whether the new teaching method, for example, say project method, is more effective than traditional lecture method. Sir, आपने यही पूछा था ना, इस तरह से कुछ पूछा था. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आपने इसी तरह का कुछ पूछा था ना. तो चलिए इसको कंप्लीट रैंडमाइज्ड डिजाइन से कैसे करेंगे. सपोज यू हैव अ ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स. ठीक है, सिलेक्टेड फॉर द स्टडी. द स्टूडेंट्स आर रैंडमली असाइन इनटू 2 ग्रुप. 30 लोग एक ग्रुप में डाल दिए, 30 लोग दूसरे ग्रुप में डाल दिए. ठीक है. सो एक ग्रुप विल रिसीव द न्यू टीचिंग मेथड व्हाइल अदर ग्रुप कंटिन्यूज विद द ट्रेडिशनल मेथड. After a few period or after a set period, both the groups take the same standardized test and then we compare their performance.
So this is, we are employing completely randomized design, and then we use the statistics to test the score or to understand whether there is a significant difference because of the new method or not. So this is called as completely randomized design, CRD. Once again, I will show you that picture, and with that picture, you can understand it better. And everything is happening randomly. It's not that group 1 we will be given a treatment 1. Yeah, group 2 will be given treatment 2. Maybe for group 1 you give treatment 2, no problem, because everything is happening randomly. So randomly assigned subject into 2 groups, and random treatment is given to 2 groups. One treatment to one group, second treatment to other group. And finally we compare the results. So this is in nutshell called as completely randomized design, CRD. So this is what the theory we just referred to. Now, few more example. Suppose I want to evaluate the effectiveness of different study techniques. For example, flashcard technique versus summarization techniques on student exam score. And now we have the sample of 40 students. So how you are going to employ this CRD? Yes, anyone answer? You have a sample of 40 students. सर 20-20 लेंगे. कौन से 20 लेंगे सर? आपके पसंदीदा 20 लोग को लेंगे, या हाइट के हिसाब से लेंगे, या कलर के हिसाब से लेंगे? Randomly select नहीं सर, रैंडमली लेंगे. वेरी गुड. 20 आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ. कौन से आधे यहाँ कहाँ जाएंगे पता है क्या आपको? रोल नंबर के हिसाब से देंगे क्या? कुछ प्री डिसाइडेड क्राइटेरिया रखा है क्या आपने? All even roll numbers will go in group 1 and all odd roll numbers will go. Is there any such criteria you have fixed? Yes. Any such criteria you have fixed or no? we can choose randomly. Yes, everything is happening randomly. उसके बाद क्या करेंगे फिर? One group will be teach with the flashcard method. Yes. Other will be with the summarization. And then we compare the treatment. Yes, we compare the student scores. Very good. Okay. Now focus on the third example. Who will read third example? In third example, May I, sir? Yeah, please. To determine which learning environment is best suited for studying library, on room, outside, 30 university students. Okay, so what is the sample? 30 students. Okay, and what are the 3 learning environment? That is in someone study in library, someone in on room, and someone outside. Okay, now you tell me, you answer how you are going to use completely randomized design for this particular study. 10 for each environment. Okay, so not necessary that you will always have the 2 groups. Here, how many groups we need to form? 3, because we have 3 types of environment. Yes. तो पहले कैसे ग्रुप कर देंगे? कितने कितने के ग्रुप हो जाएंगे? 10 10. 10 10 10. तो फर्स्ट ग्रुप में रिसीव लाइब्रेरी और नॉट नेसेसरी लाइब्रेरी? No, it may be in library, maybe in on room. Maybe but own we room have or maybe outsiders. So जरूरी नहीं है कि ग्रुप एक वाले सभी लोग लाइब्रेरी में पढ़ने वाले हो, because everything is happening randomly. So maybe one group with library, another group with own room studies, and third group with outside. And then we give the treatment, and after sufficient time we compare their results, and then we can conclude which learning environment is most conducive, most suitable, most useful for studying. Is that clear? Yes sir. Very good. अभी यहाँ पे एक थोड़ा ट्विस्ट है. ओके, वो ट्विस्ट क्या है? हो सकता है आपको लगे नहीं सर, ये लर्निंग एनवायरनमेंट की वजह से नहीं हो रहा है, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ देयर जेंडर. हो सकता है ना? हाँ सर, हो सकता है. हो सकता है ना, कि जरूरी नहीं है कि ओन रूम में. हो सकता है जनरली बॉयज का ध्यान नहीं पढ़ाई में कम है, ओन रूम में होगा तो वो पढ़ाई नहीं करेगा, वो फलाना फलाना चीजें ज्यादा करेगा.
हो सकता है बॉयज का लाइब्रेरी में पढ़ाई अच्छा हो, घर में पढ़ाई ना हो, या हो सकता है विमेन टीचर्स का लाइब्रेरी में पढ़ाई अच्छा हो, घर में काम करना पड़ रहा हो. इज इट पॉसिबल और नॉट? यस सर, पॉसिबल. हाँ, तो अगर रिसर्च को ऐसा लग रहा है तो क्या करेंगे फिर? कौन ये डिजाइन को कैसे यूज करेंगे फिर? तो हम लोग क्या करेंगे? वी डोंट डायरेक्टली रैंडमाइज द ग्रुप. क्या करेंगे सर, बताइए प्लीज, रीड इट इन रेड. We don't directly randomize the group. We use another design. यस. तो वो डिजाइन कैसे यूज करेंगे? ये रहा आपके सामने. हाउ वी आर गोइंग टू यूज अनदर डिजाइन. कौन है सर? आप और मैं, हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है? नाउ व्हाट इज देयर ऑन योर स्क्रीन? Yes sir. कौन है? So 30 university student. हाँ, उतने ही थे ना? तो अभी मैंने क्या Yes sir. कर दिया? 30 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को क्या कर दिया? दो हिस्से में डिवाइड कर दिया. हाँ, अभी 18 मैंने उनका फीमेल्स और ब्लॉकिंग कर 12 दिया. मेल्स. यस, 18 मान लो, 18 आर फीमेल एंड 12 आर मेल. अभी इसमें 12 मेल दिखाई नहीं दे रहे, यू कैन एज्यूम. Yes sir. 18 और 12, 18 फीमेल है और 12 मेल है. तो ये हो गया ब्लॉकिंग. ठीक है, तो ये कंप्लीटली रैंडमाइज Yes sir. हुआ. ये क्या किया मैंने? ब्लॉकिंग किया. एंड आफ्टर ब्लॉकिंग देन आई कैन हैव कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन. तो बेसिकली इट इज नॉट कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन, इट इज ब्लॉक्ड डिजाइन. Then I randomly assign the females and I randomly assign the males into 3 learning environments. And what are the 3 learning environments? What So are one is library, another one is own, and another one is yes, outsiders. yes, Rooms. yes. So randomly assign few female students into group 1, few students into group 2 and few students into group 3. ये 1-1 हो गया है. वहां पे group 1, group 2, group 3 चाहिए. Group 1 with the 4 male, group 2 with the 4 male and next group with the 4 male. और उसके बाद treatment 1, treatment 2, treatment 3. Treatment 1, let them study in the library. Treatment 2, let them study at their home. And treatment 3, let them study outside, maybe garden में जाके पढ़ाई करेंगे. And then I compare the result of only female. Then similarly, I assign 3 treatments to even males. One will receive or one will study in library. The second group of male students, they will study at their home, and third group will study outside. And then I compare the result. तो यहाँ पे completely randomized नहीं हुआ. यहाँ पे क्या हो गया? Initially, amongst the 30 students, I made the 2 blocks, and those blocks were made on the basis of some predetermined idea or some predetermined trait या some predetermined characteristics. तो यहाँ पे ब्लॉकिंग के लिए मैंने किसका उपयोग किया है? जेंडर का. जेंडर का. सो दिस सर इज. एक क्वेरी है मेरा. आप प्लीज पूछिए सर. सर यहाँ 18 फीमेल से और 12 मेल से, अगर 19 फीमेल होता है और 13 मेल होता है या 11 मेल होता है तो कैसे करेंगे जेंडर के बेसिस में? बिल्कुल बिल्कुल. बहुत बार ऐसे होता है कि जनरली हमारे एजुकेशन में ये होता है कि जनरली वी हैव द फीमेल कैंडिडेट्स मोर नंबर. तो आपको शायद पता है या पता होगा सर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टी टेस्ट वी एम्प्लॉय. एक इक्वल वेरिएंस वाला और एक अनइक्वल वेरिएंस वाला. तो अगर ये मेल फीमेल में बहुत ज्यादा अंतर है, सो वी डोंट यूज इक्वल वेरिएंस, वी यूज अनइक्वल वेरिएंस. यस सर, यस. ठीक है. यस सर. और हमारा एजुकेशन में ये हमेशा होता है कि जनरली इन क्लास वी गेट मोर फीमेल कैंडिडेट्स एंड वेरी फ्यू मेल कैंडिडेट्स. तो यस सर. वहां पे एनालिसिस करने के लिए हमें इस तरह के अलग अलग प्रकार के टी टेस्ट है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टी टेस्ट, एटलीस्ट आई नो दिस 3 टाइप्स. तो वी डोंट यूज इक्वल वेरिएंस, वी यूज अनइक्वल वेरिएंस. हो सकता है स्टैटिस्टिक्स के क्लास में हम लोग उसके बारे में जानकारी लेंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन. पहले का नाम क्या था सर? पहले का था कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन. यस. और यहाँ के क्या है? रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन. ब्लॉक डिजाइन. आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू. फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप. यस सर.
Only the difference is we make some blocks. Now, same in wording, a randomized block design is an experimental design that enhance the precision of a completely randomized design by grouping or by blocking. ग्रुपिंग और ब्लॉकिंग किसका कर रहे हैं हम लोग? पार्टिसिपेंट्स का कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स का कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स का कर रहे हैं, वन एंड द सेम थिंग. और किसके आधार पे कर रहे हैं? बेस्ड ऑन सम नोन क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन नोन कंफाउंडिंग वेरिएबल. जैसे हमारे इस एग्जांपल में व्हाट वाज द कंफाउंडिंग वेरिएबल? वी थॉट ऑफ दैट जेंडर इज अ कंफाउंडिंग वेरिएबल बिफोर रैंडमली असाइनिंग देम टू ट्रीटमेंट ग्रुप्स. इसके लिए 18 फीमेल को अलग कर दिया और 12 मेल को अलग कर दिया. एंड देन they further categorize randomly into male को 666 and accordingly female को भी. ठीक है? So this is randomized block design. Now key features देखेंगे. Blocking is one of the key feature. So experimental units are divided into blocks based on certain characteristics. तो characteristics क्या हो सकता है? Maybe age, maybe gender, maybe their socio-economic status, maybe their type of school या type of schooling, etc etc. बट वो known होने चाहिए. unknown से हो तो हम blocking नहीं कर पाएंगे. So blocking is one of the very prominent characteristics of RBD, that is randomized block design. And then we randomly assign within the blocks. तो यार randomization नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. Randomization is taking place, but before randomization the blocking is taking place, that we divide the subjects into different blocks. और वो ब्लॉक में जितने भी सैंपल है या सब्जेक्ट्स है या एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स है, उसका रैंडम असाइनमेंट हम लोग अलग अलग ग्रुप में कर रहे हैं. सो वी आर गोइंग वन स्टेप अहेड देन कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन. एंड देन वी कंपेयर द ट्रीटमेंट. ओके, now I have presented 3 examples. Is it visible to you? Yes sir, visible. I wish all of you read in mind the example and what is the blocking factor. And blocking factor is always known factor, which may be a compounding variable. Read in mind. So in second example, it's the gender, which is the blocking factor. Whether the male and female students have the different impact for different study technique. So blocking factor is gender. In first example, blocking factor is their grade level. And in third example, the blocking factor is their previous knowledge about the mathematics, low, medium and high. तो हम लोग पहले ही 3 ब्लॉक कर रहे हैं, लो, मीडियम एंड हाई. एंड द सैंपल और एक्सपेरिमेंटल यूनिट फ्रॉम द लो, मीडियम एंड हाई वी रैंडमली असाइन फर्दर. आई होप द एग्जांपल्स आर क्लियर. Yes please. Yes participants. Yes sir, clear sir. Clear. Okay, तो blocking factor is always the known factor. चलिए सर, आप और हम लोग बात करेंगे. ठीक है, आपका नाम सर? सर मेरा नाम सुहास है. सुहास. यस सर. चलिए सुहास जी, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर कुछ रोज और कुछ कॉलम्स. यस, कुछ रोज और कुछ कॉलम दिखाई दे रहे. ठीक है, अभी क्या हो रहा है देखिए, ये क्या बन गया? ये कलर रेड कलर हो गया. नहीं, वो उसका ज्योमेट्रिकल फिगर क्या हो गया? स्क्वायर. स्क्वायर. स्क्वायर में क्या है? कॉलम भी है और रो भी है. हाँ सर है. ठीक है, अभी ये लो, ये तीसरा स्क्वायर हो गया. दूसरा स्क्वायर, इसमें कितने रोज और कितने कॉलम है? यहाँ 3 3. 3 3. ये लो. और अभी अभी फिलहाल तो 2 ही रख रहा हूं. तो बेसिकली हमारे सामने क्या है? स्क्वायर है. एंड स्क्वायर इज डिवाइडेड, स्क्वायर इज हैविंग रोज एंड कॉलम्स.
ठीक है, अभी ये यस सर। ए बी सी डी, ये क्या है, क्या हो सकते हैं? एनी गेस? सैंपल। नो, These could be cubes. नो, These are the block design. नो, दिस इज द डेफिनेटली ब्लॉक डिजाइन, लेकिन ए बी क्या हो सकते हैं? Group? नो। पेयर। हाँ, सीक्वेंस। नो। अच्छा, एक ही रो में कोई भी ए बी सी रिपीट हो रहा है क्या? देखो जरा, No. नहीं। होता है रिपीट? सर ये ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, दीज आर ऑल यस सर। ट्रीटमेंट्स, ट्रीटमेंट। दीज आर ऑल ट्रीटमेंट्स। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक कोई भी ट्रीटमेंट रिपीट हो रहा है क्या? देखो, नहीं सर। ओके। सो ये जो है फर्स्ट वाला 2 by 2, तीसरा वाले को क्या बोलेंगे हम? वो एक्सपेरिमेंटल एक कंट्रोल ना 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 ना, ग्रुप। नॉट एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। पहले वाले को मैं बोल रहा हूँ 2 by 2 स्क्वायर, दूसरे वाले को क्या बोलूंगा, बीच वाले को? 3 by 3। यस, एंड चौथे वाले तीसरे वाले को 4 by 4। 4 by 4। चलो इतना तो समझ में आया। ये ए बी जो लिखा है वो क्या है? वो ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट है। सो ईच ट्रीटमेंट ऑकर इन एवरी कॉलम एंड इन एवरी रो। आर यू गेटिंग? यस सर। एवरीवन? Yes. ओके, तो इस तरह का अगर डिजाइन हम यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे लैटिन स्क्वायर डिजाइन, LSD। So, Latin square design is used in cause and effect situation, right? May be used. So, here in educational institute, We'll come to education example, madam. Wait, we are coming. okay. So far this diagram is clear, Latin square design. So what is the condition? That every treatment is given to everybody. So in terms of row and in terms of column, and there is no repetition of treatment. Maybe it may be 2 into 2, maybe into 3 into 3, maybe 4 into 4, and even we can have some complexities like 5 into 5, 6 into 6, etc., etc., etc. The condition is each treatment occur in every column and in every row. So this type of design is called as LSD, Latin square design. Now what is Latin square design? Let us explore. So Latin square design, it is an experimental design that controls for two potential compounding variables in addition to the independent variable. तो एक ही समय पे हमारे पास तो एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था ही, तो इंडिपेंडेंट मान लो आपने सोचा कि भाई ये जो मेथड है, जो नई मेथड का आविष्कार मैंने किया है, उसका इफेक्ट मुझे देखना है ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। तो आपके पास एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था ही, एंड व्हाट इज दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल? योर मेथड ऑफ टीचिंग, न्यूली न्यूली जिसके आपने खोज की, क्या बोलेंगे, न्यूली डिस्कवर्ड टीचिंग मेथड बाय यू। ओके, एंड यू वांट टू conduct an experiment and you want to see how far or how much this method invented by you is effective. तो कैसे खोजेंगे उसको? स्टूडेंट परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे। लेकिन हो सकता है यू वेर यूजिंग दिस मेथड हॅलो ऑन, सर. हाँ बोला सर सर आपण थोडा 5 to 10 minutes ब्रेक घेऊया का? ब्रेक घ्यायचा? विचारा, जर पार्टिसिपेंट असतील पण गरजेचं डोक्यावर तर जायला घेऊया, लागलं का? अदरवाईज कंटिन्यू करू. हॅलो. मॅडम डोक्यावर नाही जायला लागलं? अजिबात नाही सर. आय एम व्हेरी मच Please take a break. इंटरेस्टेड. येस, यू नीड द ब्रेक. नहीं नहीं 5 बजे तो खत्म करो, फिर आधा नो घंटा सर, नो सर। Yeah, sir. अरे Only मैडम, 5 minutes, 5 to 10 minutes break. मैडम your question itself is wrong. Those who want a break, they will not get your permission, no? Except me, because if I want to take the break, I will take your permission. Otherwise, all the participants are free to take their Sir, own we are breaks. requesting. We are requesting. अच्छा, that means they don't want to miss anything. सब सुनना चाहते हैं आपको। चलिए इसको रिपीट करेंगे, जो whoever takes the break, क्योंकि मैं तो कॉलेज से ही बात कर रहा हूँ. सो लॅटिन, मॅडम ब्रेक घ्यायचा आहे का? खरंच सांगा.
सर तुम्हाला ब्रेकची गरज असेल, बाकीच्या नाही, नाही, पार्टिसिपंट नाही. नसेल तर आपण कंटिन्यू, अदरवाइज मग कंटिन्यू करूया. ओके, आपण कंटिन्यू करूया. ठीक आहे. ओके ओके. So what is Latin square design? So at a time you want to control two potential confounding variables. I was giving the example. मान लो सती मैडम, you invented one method and you want to test that method, और वो method जो है आपने उपयोग में लाई and you found that it was very effective and the students marks were increased like anything. लेकिन आपका पढ़ाना या आपकी मेथड और स्टूडेंट्स के मार्क्स के बीच में दो ऐसे चीजें थी जिसके ऊपर आपका ध्यान नहीं गया. व्हाट वाज दैट? हो सकता है आपने पढ़ाते समय कोई स्पेसिफिक क्लास में पढ़ाया हो वेयर द ऑल द लग्जरीज एंड ऑल द एयर कंडीशंस वेयर अवेलेबल. तो हो सकता है वो एयर कंडीशन की वजह से स्टूडेंट्स दे लर्न बेटर. या हो सकता है मंडे के दिन आपने वो पढ़ाया हो तो छुट्टी लेके स्टूडेंट्स वेयर इन एब्सोल्युटली फ्रेश मूड. या हो सकता है आपने वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द स्टूडेंट्स और जनरली वी हैव द वेरी फ्रेश एनवायरनमेंट इन द स्कूल, उस समय आपने उसको पढ़ाया हो. सो दीज आर ऑल कंफाउंडिंग वेरिएबल्स. तो उसको आपने कंट्रोल नहीं किया. You have not controlled these variables. So this Latin square design will allow me to control these confounding variables along with my independent variable. आपका independent variable क्या था? आपकी method. Dependent variable क्या था? So students performance. So along with your regular independent variable, that is your teaching method, you are simultaneously controlling two other confounding variables. And this can happen when we use Latin square design, LST. कैसे पता चलेगा? Okay, so in this grid each treatment appears exactly once in each row and each column. आपने देखा कि treatment appears only once in each row and each column, ensuring that the effects of the two confounding variables are balanced across the treatment. Now let us take the example. Yes, is it visible, Sati madam? Yes sir. Yes, sir. ओके, तो अभी सती मैडम का एग्जांपल दिया है तो वही कंटिन्यू करें. सती मैडम, यू वांट टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ योर टीचिंग मेथड ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, लेकिन उसके साथ साथ you were controlling two other variables and those variables are confounding variables. For example, class is one of the variable and time of the day. आपने सुबह पढ़ाया, दोपहर को पढ़ाया, शाम को पढ़ाया. You were simultaneously able to control these two variables so that that effect will be balanced. And this will happen, this will be possible only when we make use of Latin square design. तो इस तरह से Latin square design आपके सामने मैंने पेश किया. You are comparing method A, method B and method C. तो आपने मॉर्निंग में भी पढ़ाया, आफ्टरनून में भी पढ़ाया और इवनिंग में भी पढ़ाया. उसके साथ साथ उस मेथड के साथ उस मेथड का उपयोग आपने मैथ्स पढ़ाने में भी किया, साइंस पढ़ाने में भी किया और इंग्लिश पढ़ाने में भी किया. सो एवरी रो एंड एवरी कॉलम इज गेटिंग all treatment, method A, method B and method C. Is there any repetition of method in any of the row or column? Sati madam? No sir. So here you are controlling the class and time of the day or subject or time of the day. Even location sir. Huh? Even location also. Even location. So you can add one more. So in that now this is 3x3 Latin square design. 3x3. Yes. You add one more parameter like location, it can become 4x4. Along with location, maybe specific classroom. So it will be 5x5 kind of Latin square design. क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे मेथड का जो आउटपुट आया है दैट इज बिकॉज ऑफ द टाइमिंग. हो सकता है सुबह सुबह स्टूडेंट्स आर इन फ्रेश मूड सो दे लर्न बेटर, और हो सकता है इवनिंग और आफ्टर लंच they are quite lazy or they are quite in a relaxing mood, they don't want to learn. So we don't want to have the impact of this confounding variable and therefore we use Latin square design, LST. सर मीडियम तुम्ही मॅडम पाहिजे तेवढे ऍड करू शकता त्याच्यामध्ये. ओके ओके आवश्यक असतील तर. अच्छा अच्छा. As a researcher you have to decide whether that is a confounding variable, whether that will have an impact on my result, then you can control it by
having the equal treatment for all the rows and for all the columns, and no repetition of any treatment to any of the row or column. अजून एक एक्झाम्पल आपण बघूया. Yeah, each class is taught using each method. This is the same example I gave. Now let us take another example. Sati madam, please read. Yes, sir. Example 2, evaluating study techniques across days and rooms. Yes, I was mentioning whether the room is very luxurious and across the day. We want to control these two. So how I can prepare the matrix? Matrix by, sir, four rows and four columns. Yes, the design is in front of you. Room 1, room 2, room 3, room 4. And different days in a week: Monday, Tuesday, Wednesday, or Thursday. And the 4 methods: mnemonic, repetition, concept mapping, and self-testing. Sir. Yes, madam. Sir, that means each treatment, मतलब जे A, B, C, D आपण जर consider केलं, that appears in each row, na? Yes. Across different classes. Yes. That means each treatment also appears once in each column. Yes, only there is no repetition of treatment to any of the row or column. It will happen only once. Yes, yes. And this way we are going to control that effect. हो सकता है कि Monday पढ़ाने में ज़्यादा, I mean the students are getting more output because earlier day was the Sunday and they are in a very fresh mood. So we want to nullify that effect. तो Monday भी देखेंगे, Tuesday भी देखेंगे, और any 2 days or any 3 days or 4 days in a week. And different classroom scenario, different classroom, जहाँ पे AC लगा है, जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे बेड आसन व्यवस्था ठीक से नहीं है, और जहाँ पे एकदम luxurious बैकअप क्या बोलते हैं उसको, कुशन वाले सीट्स है. So we want to nullify that effect. I hope this is clear. Yes, madam. Isn't this used for the timetable making? You can use matrix. Because I've seen, I'm not much experienced in educational industry, definitely, but I have seen while making the timetable, most of the time, sometimes there are one subject in 2 classes, 2 times, but most of the time it is mentioned at once. So do you think it can be used in timetable making as well? But madam, in school or in colleges, we are having many different teachers or multiple teachers to teach the same subjects and for different divisions, and therefore we don't have any repetition or any overlapping. Yes, yes, correct. Okay. So I hope this design is clear. क्या नाम है इस डिजाइन का? Yes, sir. Square. Latin square design. Latin square design. LST. So what was the first design? Quasi. No. Now the third type, based on the randomization. Completely randomized design. Completely randomized design. उसमें हम लोग blocking add कर देंगे like male and female. Then what was the second type? Randomized block design. Very good, randomized block design. And now if you want to nullify the effect of confounding variables, then we are having the third type. And what is the third type right now? Factorial, no, sir? Latin square. Latin square design. Latin square design. Now, सती मॅडम आपणच बोलूया म्हणजे मला बरं पडतं. ओके, चलो ये तो मैंने ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन. और एक एग्जांपल. यस, चलो मुझे अभी ये जान लेना है वेदर द स्लीप डिप्राइवेशन हैज इफेक्ट ऑन द टेस्ट स्कोर. कैन वी स्टडी मैडम दिस पर्टिकुलर टॉपिक? सती मैडम, रोशनी आहे का? रोशनी आहे सर, आहे. हाँ रोशनी, विद्यार्थी आहे. हाँ रोशनी, you will answer this. Can we study sleep deprivation, whether it has an effect on test score or maybe performance of the learner? Can we study this? No, sir.
का नाही नो का नो याच्यात काय आहे नसण्यासारखं काय आहे? Yes, sir. It has. It आर यू has, अलाइव sir. राइट नाउ रोशनी मैडम? Sir, I just joined the meeting. Okay, okay. So Sati madam, we will continue with you only. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So can we study this particular topic? Sleep deprivation has effect or has not effect on the test score? Can we study? I am asking yes or no. Sir, I am little bit confused. अरे नहीं, इसमें कंफ्यूज क्या है मैडम? स्लीप डिप्राइवेशन है. Maybe yes or maybe not. अरे यस बोलेंगे ना मैडम, इसमें Okay, नहीं yes. ओके. तो क्या Yes. करेंगे? स्टूडेंट है, ठीक है. कौन है ये? स्टूडेंट है. हाँ सर, स्टूडेंट आहे, गर्ल. ओके, तो उसको एक बार स्लीप डिप्राइव्ड करके उसका टेस्ट लेंगे और एक बार गिविंग सफिशिएंट स्लीप एंड देन वी विल टेक द टेस्ट. कर सकते हैं या नहीं कर सकते? How it is possible, sir, sleep deprived and you are taking test? अरे क्यों नहीं कर सकते? Tell me ना sir. क्यों नहीं कर सकते? इतना ज्यादा आपने होमवर्क दिया है कि बेचारे को सोने को ही टाइम नहीं मिला. हाँ. और दूसरे स्टूडेंट या दूसरे बार बिल्कुल का होमवर्क नहीं दिया, कुछ काम नहीं दिए, एंड नेक्स्ट डे यू कंडक्ट द टेस्ट. तो फिजिबल है या नहीं फिजिबल है? यस, इट इज पॉसिबल. It's possible, sir, but result is not varied. It is not moral. Yeah, it's not a moral also. Yes. It's not ethical बोल सकते हैं, but it is possible. Yes sir, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये हो सकता है क्योंकि हम ये भी दिखे हैं ना क्लास में, जो बच्चा लेट नाइट तक जाकर पढ़ाई करता है वो क्लास में भी इनएक्टिव रहता है उसको. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, तो हो सकता है indirectly सर. हम लोग कर ही सकते हैं, लेकिन एज अ एक्सपेरिमेंट ऑल्सो वी कैन परफॉर्म. सो द लर्नर इज डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप and we conduct a test, and the same learner, I repeat, the same learner, I repeat, the same group of people or same experimental unit or same sample, उसके बाद भी उनको टेस्ट दे सकते हैं. स्लीप डिप्राइव्ड होने के बाद टेस्ट दे दिया, और व्हेन दे गॉट इनफ स्लीप, साउंड स्लीप, उसके बाद भी हमने एक टेस्ट दे दिया. तो ऐसे कर सकते हैं नहीं कर सकते? ऐसे कर सकते हैं. लेकिन अगर सेम ग्रुप ऑफ पीपल है, सेम सैंपल है या सेम एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, तो हम लोग इसको नहीं करेंगे. अदरवाइज ही नोज अबाउट द एग्जाम, द पैटर्न, द टाइप ऑफ क्वेश्चन. यस और नो? Yes, yes, sir. यस और नो? हाँ बोला. सर पण असंही होऊ शकतं की स्लीप डिप्राइव्ड आहे पण तरी पण जर मेथोडॉलॉजी एखादी इंटरेस्टिंग असेल किंवा जी ट्रीटमेंट देतात ती इंटरेस्टिंग असेल तर म्हणजे त्याचा इफेक्ट नाही होऊ शकत जरी त्यांना स्लीप डिप्राइव्ड असतील पण एखाद्या ह्याच्यामुळे ते लोक इंटरेस्ट घेऊन करू पण शकतात. What about the feeling of fatigue, cognitive function, mood changes होणार त्यांचे? there are These are psychological factors ना. बरोबर आहे. नाउ इन ऑर्डर टू avoid all these issues or all these problems which are right now raised by. नाहीच केलं पाहिजे. माझी अर्ध्या ह्याच्यातूनच जाते, मला माहिती. काय झालं? Hello. My daughter, no sir, Aradhya, she have the same problem. That's why I'm telling की सायकोलॉजिकल फॅक्टर्स आहेत भरपूर, की त्यामुळे तुम्ही काही टेस्ट देऊन उपयोग नाहीये. कारण एक झोपेचा जो फॉर्म्युला आहे, मी तर म्हणेल की तो मेंटेन केलाच पाहिजे. होय होय. नाही पण हे आता तुम्हाला मॅडम असं तुम्हाला वाटतं म्हणून नाही, उसको हम लोग को एक्सपेरिमेंटल के द्वारा प्रूव करना पड़ेगा. सो वी नीड टू यूज अप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. हम डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं ना. Yes, yes. So if the candidate is same or same group of people or the same sample or same experimental unit, and to the same unit you are depriving them of the sleep and conducting the test, or next time maybe after a week or maybe after a month, if you are giving them sufficient sound sleep and then you are giving the similar kind of test, it can create an issue because the candidate or the sample or the experimental units, they knows ABC or what sort of questions you are going to ask. So it is as good as you have disclosed the test to them. तो फिर हम लोग एक अलग डिजाइन का उपयोग करेंगे. So are you keen to know what sort of design we can use in such case?
Yes, madam. Roshni, हाँ सर. would you like to know which design we can use in Yes, such yes. case? चलिए, मला आता रोशनी और हम बात करेंगे, ठीक है? सर, अटेन्शन नसलेल्या मुलांना तुम्ही बरोबर पकडता. हो, ते ओळखता येतं आवाजानं. But with simple question I am going to ask, because Yes, yes. our interaction will help other people to understand. Yes. Because always I am keeping in mind I am teaching online. Okay. And my intention is let idea reach to each and every head and each and every heart. And therefore, I think we are discussing now and other people will be very keenly listening to our conversation. Okay, so are you ready to answer my questions? Yes, sir. Okay. हाँ, क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर? स्टुडंट्स आहेत. ते असे क्राउड आहे का काय? पेअर मध्ये आहेत. हा, पेअर मध्ये आहे. दिस इज नॉट क्राउड. दीज आर डेफिनेटली 6 स्टुडंट्स, बट दे आर स्टँडिंग इन पेअर. पेअर. तो पेअर वर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आता काय करतोय बघू आपण. नाव these are their grade point: 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 4.5, 4.6. तो मैंने पूरे पॉसिबिलिटी ध्यान में रखते हुए आई हैव टेकन द पेयर ऑफ पीपल हैविंग मोर और लेस सेम ग्रेड पॉइंट. 2.3, 2.4 ज्यादा फर्क नहीं है, या 3.3, 3.4 ज्यादा फर्क नहीं है, 4.5, 4.6 ज्यादा फर्क नहीं है. एम आई राइट? यस. लेकिन 2.3 और 4.5 में फर्क है या नहीं है? यस. 3.3 और 4.5 में फर्क है या नहीं है? But in order to nullify that effect, I have taken different pairs with different CGPA. अब मैं क्या कर रहा हूं? I am randomly assigning them SD. Now, can you guess what does SD mean? Strong. Not significant. Significant. No, 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 no. Strongly designed. No, sleep. Sleep deprived. Yes. Not sleep deprived. Sleep is sleep deprived, and NS stands for not sleep deprived. In Right. second example also 3.3 sleep deprived. 3.4 not sleep deprived. Not sleep deprived. 4.5 not sleep deprived, and 4.6 sleep deprived. Okay, so these assignment I have made randomly. जरूरी नहीं है कि पहले वालों को आपने SD देना चाहिए, आप उसको NS भी दे सकते हैं. It is up to you. Is this clear? Yes, yes. और फिर हम क्या करेंगे? I compare the result. Sleep deprived and sound sleep. या not sleep deprived. I compare the result. अब ये result compare कैसे करेंगे? We give them test, and after the test, their grades are as follows. What are the grades? B.A plus C.A means not sleep deprived have higher grades. Yes. 2.4 not sleep deprived getting A plus. 3.4 not sleep deprived getting A. And in 4.5 not sleep deprived getting A. So what does it mean? Means impact होतं. Impact होतो. So this is called as Match pair design. Match pair design, because the samples were grouped in pair. And in order to avoid all those confounding effects, जर तुम्हाला सांगितलं ना, concentration आहे, हे आहे, ते आहे, चांगली effective method आहे, वगैरे वगैरे वगैरे. In order to avoid all those issues, I utilize the design called match pair design. I wish design. Look at this particular presentation. The samples or experimental units were in pair. बोलिए सर, कुछ पूछते हैं आप? सर ये जो 2.3, 2.4 ये सब थोड़ा बता दीजिए क्या है? अरे वो उनके ग्रेड पॉइंट है, सीजी पे बोलते हैं ना हम लोग, जीपीए ग्रेड पे. हाँ सर, ये सर ग्रेड है, ग्रेड वो समझने के लिए लिखा है खाली. 2.3, 2.4 आप उसमें 8 पॉइंट 10 पॉइंट भी लगा दो ना, कोई दिक्कत नहीं. ओनली थिंग इज द सैंपल्स आर इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर.
तो खाली एक पेयर लेके I have not concluded that whether the sleep deprivation has the effect on their test score. So I have taken the 3 pairs, and that is also with varying CGPA or varying grade pay, not grade pay, grade points. 2.3 भी लिया है, 3.3 भी लिया है, 4.4 भी लिया है. केवल एक ही अगर लेता तो perhaps I would have question. तो मैंने एवरेज भी लिया है, अबव एवरेज भी लिया है, एंड बिलो एवरेज भी लिया है in terms of their grade, and randomly assign treatment: sleep deprived, not sleep deprived, sleep deprived, not sleep deprived, not sleep deprived, sleep deprived. और भी मैं ऐड कर सकता हूं उसमें, लेकिन स्क्रीन के ऊपर मेरी इतनी जगह नहीं थी, इसके लिए मैंने 3 ही रखा है. आई होप यू अंडरस्टूड. यस सर. ओके, तो इसको हम बोलते हैं, ये डिजाइन को हम लोग बोलते हैं मैच्ड पेयर डिजाइन, एमपीडी, मैच्ड पेयर डिजाइन. अभी ये मैच पेयर डिजाइन क्या है? It is a type of experimental or quasi-experimental research method where the participants are paired. किस तरह से paired करेंगे उनको? Based on specific characteristics. For example, based on their age, based on their gender, based on their ability level. जैसे अभी हमने grade points के ऊपर उनको divide कर दिया था, या socio-economic status that might influence the outcome of the study. तो यहाँ पे हमने जो देखा, माझा एरो पण दिसतो का मॅडम इथे मी स्क्रीनवर केल्यावर? हो सर, रेड एरो. नाही नाही, रेड एरो नाही, हा कर्सर 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 दिसतोय तुमचा. कर्सर दिसतोय ना. सो दिस पेयर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ पे कोई जेंडर का इशू नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मेल फीमेल दोनों भी है. हो सकता है आई कैन मेक बोथ द मेल्स, बोथ द फीमेल्स, एंड मे बी नो जेंडर. So this way also I can make the match pair design. It is up to me as a researcher how I can make the pair design, and it is a very known criteria to the researcher. For example, it can be on the basis of age, gender, or maybe ability level, socio-economic status, etc., etc., etc. Okay, so participants. पैरेलल ग्रुप डिजाइन के साथ सेम है क्या? नहीं 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 मैडम, पैरेलल ग्रुप डिजाइन में इसमें पेयर है, पैरेलल ग्रुप डिजाइन में पेयर की जरूरत नहीं होती. Here we always have the experimental unit in the form of a pair. Now, one member of each pair is assigned to the treatment and the other no treatment. यानी दो में से एक जो है वो एक्सपेरिमेंटल हो गया, एक कंट्रोल हो गया. स्लीप डिप्राइव्ड वाला एक्सपेरिमेंटल हो गया, नॉट स्लीप डिप्राइव्ड वाला कंट्रोल हो गया. This approach helps to reduce the variability caused by those characteristics, making it easier to isolate the effect of intervention or treatment being studied. तो जो confounding चीजें थी ना आपने जो कहा, उन चीजों का परिणाम कम करने के लिए this match pair design is used. And the goal is to ensure that groups are similar as far as possible in all the aspects, except for the variable being tested. And what is the variable being tested? Sleep, sound sleep, or sleep deprived, improving the validity of the result. ओके, तो कैसे करेंगे मैच पेयर डिजाइन? आइडेंटिफाई द मैचिंग वेरिएबल्स. नाउ यू डिसाइड द क्राइटेरिया फॉर मैच द वेरिएबल्स. Prior knowledge, maybe motivation, maybe demographic, maybe age, maybe gender, maybe social economic status, maybe their grade points. It is up to you and relevant to research. Then pair the participants. Match individuals who are similar in these traits. Then random assign the treatment to each pair. That is each member of the pair. Within each pair, randomly assign one treatment to one and second treatment to other. Then apply the intervention. For example, new teaching method है, sleep deprivation है, कुछ motivational strategy है, या new technology है, and you compare the outcome. Analyze the difference between the groups to assess the treatment effect. Once again, I show this. Now you are going to answer next problem. How you are going to have the match pair design. इसको देख लेंगे, ठीक से समझेंगे, and get ready to answer. Is it interesting? Match pair design? Yes, sir. Okay, I hope you have understood this particular pictorial presentation. If yes, please answer this question. You want to test the effectiveness of
two teaching methods, traditional lecture based method versus interactive technology driven method. तो मैच पेयर डिजाइन कैसे करेंगे आप? यस अरे क्या हो गया? basis of their marks, on the basis of their marks, grades. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? You have to pair the matching students. So one of the criteria can be their marks. ठीक है? Yes, sir. Okay, so those who got 85%, they will be a pair will be made of those people with 70% and less than 70%, maybe 65. तो अलग अलग आपने मार्क्स के हिसाब से उनको पेयर बना दिया. What is the next step? ग्रास्पिंग पावर पे भी कर सकते हैं ना उनको मैचिंग. अरे आप दुनिया में से किसी भी क्राइटेरिया के साथ कर सकते हैं, लेकिन उनके ग्रास्पिंग पावर को आप जज कैसे करोगे? How you If are we going to? know them before. Yeah, if you know them before, but again very difficult to point out their grasping power. ये कैसा है? These are all very concrete things like marks. 85% मिला है, 75% मिला है. Interest in the subject. Yes, interest in the subject also can be made. Interest in the same similarity. Yeah, as a researcher, it is up to you based on your topic, based on your research problem. ठीक है? What is the next step? हाँ बोला. सर मला जे समजलं ते मी सांगू का जरा? हो मॅडम सांगा ना. म्हणजे विचारू का तुम्हाला? विचारा ना. मला हे बोलायचंय सर की मॅच पेअर टेस्ट जे आहे त्याच्यामध्ये समजा पेअर 1, 2 आणि 3 पेअर 1, 2, 3 मध्ये आता जसं पेअर 1 मध्ये ए बी स्टुडंट आहे आणि पेअर बी मध्ये सी डी अँड देन ई एफ असं काउंट करूया. तर त्यांचे प्रीटेस्ट कोर्स घेतले दोघांचेही, नंतर त्यांना रॅन्डमली असाइनमेंट दिलं. नाही, तुम्ही प्रीटेस्ट स्कोर करून मग त्यांचे पेअर करा. हा नाही, पहिलं पेअर करून त्यांचे प्रीटेस्ट कोर्स दोघांचे घेतले मी. नाही पण मग पेअर कोणत्या बेसिसवर केली तुम्ही? व्हॉट वॉज द क्रायटेरिया टू मेक द पेअर? अच्छा हा मी एखाद्या परफॉर्मन्स वरती केलं त्यांच्या. एखादं समजा मॅथ्सचं मी काहीतरी एखादं टॉपिक दिला, त्याच्यावरती टेस्ट घेतली आणि त्याच्यावरती मी त्यांचे प्रीटेस्ट कोर्स काउंट केले. त्याच्यानंतर मी त्यांना एक रॅन्डमली एक असाइनमेंट पुन्हा दिली. मॅडम तुमच्या स्क्रीनवर काय दिसतंय का आता? मॅच पेअर डिझाइन हाऊ इट वर्क्स. Match pair is how it works. Identify matching variables. So with this particular guideline, you answer. Identify matching variables. So I'm asking on what basis you made the pair. Was there prior knowledge? Was there motivation? Was there demographic? You said something related to maths. Okay, maths काय? Maths interest in maths. Yes sir. Okay. त्याच्यानंतर pair participants. Yes. Match individuals who are similar in these traits. Okay. त्याच्यानंतर त्यांना रॅन्डमली असाइनमेंट दिली. Yes, correct. विदिन each pair. मग ते एक व्यक्तीला जर ट्रेडिशनली अँड द सेकंड पर्सन आहे त्याला ट्रीटमेंट यूज केलं. बरोबर. करेक्ट. करेक्ट. आता कोणाला रेग्युलर आणि कोणाला ट्रीटमेंट, दिस इज ऑल्सो रॅन्डमली सिलेक्टेड. ट्रीटमेंट फॉर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. Yes, but and who is the the other experimental? one is control group. That means traditional conventional method we can use. Yes, but out of pair, that means out of two people to whom you are going to have the experimental intervention, that is also not pre-decided. Randomly you have to select. Yes. Okay, so you apply the intervention randomly. Yes. Okay, पहिल्याला ट्रेडिशनल, दुसऱ्याला न्यू मेथड. दुसऱ्या पेअर मध्ये पहिल्याला न्यू मेथड, दुसऱ्याला ट्रेडिशनल मेथड, and likewise you go on changing. Yes. Okay, so you have up to 4th point. Yes. And then compare the त्यांचे results. Yes. Now it's match pair design. Yes. Complete. त्यामुळे पेअर मॅचिंग साठी तुम्हाला
predetermined criteria लावावाच लागतो. Yes, yes. And then you Yes, sir. pair the participants and then you apply the random assignment. Yes, sir. Thank you very much, sir. So I think this was the last slide. Thank you. See you again. Thank you, sir. Sir, हम लोग थोड़ा thank you so much, sir. कैमरा What ऑन nice करेंगे, explanation. कैमरा ऑन करेंगे जरा, मैं भी देखना चाहता हूँ कौन कौन है मीटिंग में. आई होप इट वाज इंटरेस्टिंग. Yes, sir. Yes, sir. Miss किया थोड़ा due to some. Sati. Sir, it was not only Yes. interesting, sir, very much Yes, interesting. Rekha madam. हाँ, क्या बोल रहे सर? Sir, I am telling that it is not only interesting, it is very much interesting, sir. Yes, Till sir. Yes. 2 p.m. I am sitting constantly, and it is very much interesting, sir. Before this, I have not attended such type of lecture, and very much new thing I come to know in this lecture. Thank you so much, sir. Oh, really? Credit goes to Harichandan madam and HB college. नहीं. मैडम कुछ फोटो वोटो लेंगे आप? जनरली हम हाँ? लोग लेते हैं ना, कैमरा ऑन करके फोटो लेते हैं ना. हाँ. सर आपलं लेक्चर युट्यूब लाईव्ह आहे. हाँ, युट्यूब लाईव्ह चाललेलं आहे. अरे वाह, व्हेरी गुड, थँक यू. पाठवणार सर तुम्हाला लिंक. सर हमको ये जो पीपीटी भी दीजिए. हम लोग को ऐसे सोचा हुआ है कि उसको ये करके हम पब्लिश करेंगे रिपोर्ट. पीपीटी का रिपोर्ट थोड़ी ना होता है मैडम. नहीं पीपीटी आप देंगे ना, हम इसको सर theoretical करेंगे. कधी तुम्ही शेअर करा. नहीं हम आपका लेके अरे कंटेंट, आई विल प्रोवाइड द कंटेंट, डोंट वरी. हाँ यस यस यस. वही आप कंटेंट देंगे ना. आप कंटेंट देंगे तो वेरी गुड. वर्ड फॉर्म में देंगे तो वेरी गुड. नहीं देंगे तो हम उसको कन्वर्ट करके करेंगे, ऐसे बोलिए. अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तर 17th and 19th दोघांचा कंटेंट. We are waiting for this content, sir. So Sati madam, in a आज nutshell, तो मिस किया. what we learned, just summarize so that we can stop. सुपर्ब सर, सुपर्ब. मी आता समराईज करते जेवढं मला समजलं रेखा तेवढं. मैडम कुछ बोल रहे थे, बोलने दो. क्या हाँ, बोल रेखा त्याच्या मैडम. आधी रेखा मॅडम. रेखा मैडम प्लीज. हा सर, चक्रदेव सर, तुम्ही जे नमस्कार. रॅन्डम सांगितलं प्री टेस्ट आणि पोस्ट टेस्टला रॅन्डमली का, तिथे काही क्रायटेरिया नाही यूज करायचा का? कुठे? आपण प्री टेस्टला जर सती मॅडमनी जो क्वेश्चन केला की प्री टेस्ट आणि ह्याच्यासाठी, तर मग तुम्ही तिथे म्हटलं की रॅन्डमली, मग तिथं रॅन्डमली का? कारण आपले एक्सपेरिमेंट दिला. मॅच पेअरच्या बद्दल म्हणताय का? हा हा. मग मॅच पेअर मध्ये आधी तुम्हाला पेअर करण्यासाठी क्रायटेरिया लावावाच लागतो ना. तुम्ही पेअर कशी, तिथे तुम्ही ते नाही मेन्शन केलं ना सर. त्याच्यासाठी मेन्शन केलं ना, तुम्ही कुठला तरी एक क्रायटेरिया लावून ते मॅच पेअर करणार. मग कुठला क्रायटेरिया असू शकतो? जेंडर क्रायटेरिया असू शकतो, त्यांचं प्रिव्हियस नॉलेज असू शकतो, त्यांची एखाद्या विषयातील आवड हा क्रायटेरिया असू शकतो, किंवा त्यांची लोकॅलिटी असू शकतो. तरी ते आवड येणारच नाही सर, आवड नाही येणार इकडे. नाही, मी कारण का टाइप ऑफ बोला सर. क्रायटेरिया असू शकतो. हा. मॅच पेअर झाल्यानंतर देन यू रॅन्डमली असाइन द इंटरव्हेन्शन लाईक अ कंट्रोल ग्रुप अँड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. या टॉपिकवर मी तुमच्याशी नंतर बोलेन. हो चालेल चालेल मॅडम, नक्की. माझ्या ज्ञानात भर पडेल, नक्की नक्की. हा. ओके सर, थँक्यू. Okay, anybody have questions? Please ask. Samiksha madam. We are not having a questions, but we want to say some. I want to say something that the session was a very very good, and it is really useful in the action research which we are going to conduct in the SEM 4, because I am in the B.Ed SEM 4, so it's really helpful to me a lot. Thank you madam, thank you. सबको हेल्प के लिए ये कोर्स है कि सब रिसर्च ओरिएंटेड होने का है. अभी बिना रिसर्च में टीचिंग नहीं चलेगा. यस. एक मैडम वर्ड है ट्री. टीचर शुड ऑलवेज हैव द ट्री. नाउ व्हाट इज दिस ट्री? ट्री स्टैंड्स फॉर टीचिंग. तो बिना टीचिंग के हम शिक्षक कहलाएंगे नहीं. सो टी इज फॉर टीचिंग. आर इज फॉर द रिसर्च. तो बिना रिसर्च टीचिंग को कोई मतलब नहीं है. TR एंड डबल ई स्टैंड्स फॉर एक्सटेंशन एजुकेशन. TR. पहला मैं वही बोला था, हमारा टीचिंग और ये रिसर्च एंड एक्सटेंशन. But your way of explaining is very good. Actually, मतलब you teach in the simple way, because for us it is a very much important that because we are simple है ना. yeah,
it is in a simple way. As per my opinion, if you will ask to me, then it is in the simple way, but in the depth, and we understood what is actual research. So we will able to conduct it. Yeah. Great. So it was very good. Thank you much. Thank you so much, sir. सर मला आवडलेली एक महत्वाची गोष्ट ह्यातली की मला वाटलेली की जनरली काय होतं, रिसोर्स पर्सन येतात, बोलतात, आपल्याकडे ती सगळी माहिती गुगलवरती आहे, पण ती एक्झाम्पल थ्रू मांडून दाखवणं ते खूप इम्पॉर्टंट आहे, जे व्हायला पाहिजे होतं आणि जे झालं. त्यामुळे खरंच हॅट्स टू यू सर, सुपर. सर नुसते हात जोडू नका, कंटेंट पण पाठवा. कारण आम्ही ते मुलांना आमच्या ग्रुपमध्ये पाठवतोय, त्यांना खरंच खूप युजफुल होईल. सर गेला सर है, सर किधर के? अरे मैं किधर गया? आप जब तक मुझे छोड़ते नहीं है मैं थोड़ी जाऊंगा. सो हमने प्रॉमिस किया था, बिल्कुल अभी 5 बजने को 5 मिनट कम है. So I hope everybody learn lot of things, new things. I am not expert, but I am also still learning. और जो कुछ ज्ञान यहाँ वहाँ से बटोरा था, just I shared with you all. Thank you, sir. Thank you. You have explained in a very simple way. I have read all the topics, but today I have learned, I understand more, that I have prepared for my examination purpose, this all types of quasi experiment but I write only for the exam purpose. But today I have understand more. What was that? Thank you so much, sir, for this experimental design. थैंक यू सर. मैं मिस सर किया. माझं तर पीएचडी होऊन सुद्धा मॅच पेअर डिझाईन काय होतं मला माहिती नव्हतं, जे आज कळलं. त्यामुळे आपण आता वोट ऑफ थँक्स कडे वळूया. Yes, please. Okay. Good evening, one and all. I am immensely thankful to Dr. Chakradeo, sir, Principal of CSMM, Chembur, for delivering such an insightful and very enriching session on methods of research and research design. Sir, your expertise and engaging way of presenting complex research methodologies have given us a clearer understanding of how to approach research systematically, from explaining various research methods to designing an effective research framework. Your session has been truly immenseful, enlightening. We sir, also discussed some research designs, blueprint, framework, objectives and approach, data collection, something surveys, experiment through, sampling methods, data analysis techniques. These are the completely logical plan. Even sir explained very well classification of experimental research design based on degree of control. That's 7 aspects. I just repeat, based on degree of control, based on level of randomization, based on structure of the design, timing and measurement, and some sub points also in that timing and measurement. That's longitudinal design sequence, cross sectional design sequence, sectional design, then sequential design. Fifth point, that is the number based on number of variables, univariate and multivariate designs. Then based on purpose, descriptive, causal comparative, exploratory design. Then last point, that is the number of independent variables. These are single, factorial or multiple. Then sir very well explained experimental design, very much nicely terminologies of research methodology course. Sir, I'm very much thankful to you, and we are sincerely appreciate the time and effort you have taken to share your valuable knowledge with us. Thank you very much, sir. And please share your content with us. Thank you, sir, once again. Thank you so much. Madam, एक request है. Now day after tomorrow we are meeting. Yes. On 19th. So if possible, yes, sir, we can use the multiple device. Of course, I don't know whether the theory is to be only delivered or some practical, because it's a statistics, and I believe unless until you have some hands-on experience, statistics lecture will not make any sense. So if possible, make sure that you are having 2 device. एक मोबाइल पे करो, एक लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ऊपर करो.
ठीक है, सो साइमल्टेनियसली करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे लेकिन जो कुछ पढ़ेंगे इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करेंगे. Yes, sir. Yes, sir. So Okay. with this, Thank you once again, sir. yeah, thank you so much. Thank you, sir. Everyone, please fill your attendance Everyone sheet. to take a 2 device. Yeah, if possible, take the 2 device so Okay. that simultaneously, not simultaneously, but after demonstration, you can perform the same statistics on your. Yeah, sure, sir, sure. You can attend the we'll meeting. do that. You can attend it on your smartphone, and you can practice And it. laptop, right? Yes, laptop. Yeah, thank you. Yeah, sure. We will do that, sir. Thank you. Yeah. Thank you. Have a good day, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. And thank you to ma'am. Thank you, Sakti ma'am, also. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Huh? Thank you. You